मध्ये चालेल मग तो पण इंट्रोडक्शन घेऊन घेऊ. हा घ्या ना, तुम्ही सुरू करा, काही प्रॉब्लेम. ओके. नमस्कार. Good morning to all participants. Today is our resource person, Dr. Praveen Yennawar sir, professor in Computer Science Department. Welcome to sir in this pre-PhD coursework. Now I would like to request Deepika Patil ma'am. Please introduce Dr. Praveen sir in brief. Deepika ma'am. Yes, sir. Thank you. Good morning, everyone. I, Deepika Patil, representing Dr. Babasaheb Ambedkar Maharashtra University, am delighted to extend a heartfelt welcome to Mr. Praveen Yennawar, a distinguished professor representing his own contributions to research. Dr. Sir expertise lies in realm of vision and intelligence systems as well as administrations of key university centers, including University Network and Information Center and the University Science and Instrumentation Center. As a young scientist, Dr. Yanawar has demonstrated exceptional prowess in the field of computer science and information technology. His commitment of advancing knowledge and foster innovation further evidenced by his substantial body of research publications and his invaluable guidance to aspiring researchers. Dr. Yanawa's contribution extends beyond the confines of the laboratory and is actively engages in the scholarly community as a journal reviewer and editor. His dedication to academic excellence has been recognized through prestigious awards, including the first prize in the Inter-University State Level Research Festival, Avishkar 2009, and the esteemed Vidyabhushan Award in 2010 by INSA, that's Indian Netset Association Amravati. Furthermore, Dr. Yanavar's impact is evident in his patent portfolio with one granted patent and five published patents showcasing his innovative spirit and technology acumen. In conclusion, Dr. Praveen Yanavar embodies the epitome of academic excellence, research prowess, and visionary leadership. It is an honor to present him as a distinguished representative to Dr. Babasaheb Ambedkar Maharashtra University. Please join me in extending our heartfelt appreciation and warmest welcome to Professor Praveen. We are honored to have you with us today, sir. We are eagerly anticipate your insights and contribution to our academic discourse. Thank you, sir, and welcome once again. Thank you, ma'am. Welcome, sir, again. Now I would like to request Dr. Praveen Yennawar, sir. Please guide up all students and participants. Very good morning. Rather very warm good morning, one and all. At the outset, I would like to thank the volunteer who has narrated my profile with you all, and I would like to thank Suhas Patak sir for giving me this opportunity to have an interaction with you all on the area of mutual interest. Mutual interest, rather, like it is kind where you all are interested in, and this is and one of the important segment of research as well. So today the topic which is given to me is about presentations and how you can present your research before the learned audience, and while presenting your work, uh, what care you are supposed to take, and how well you can present your research work in front of the audience. This is what actually the intent of this today's session. Okay. So, but like most of you have given your presentation at different platforms. By that I mean, like, see, you have been introduced to this PowerPoint presentations when you were at your graduation.
then you did your post-graduation, you must have presented seminars and all that stuff. Now you are doing your PhD program. So here also in this case, you have gone for presentation as well. So you present your research-related work into the RAC, RRC, and likewise. So where you are actually presenting the content, right? But it was seen that the approach of presenting the content is very, very casual and it is not pinpointed. So your coordinator, Professor Pathak sir, has taken this, noted this particular concern that the approach of the student is very casual while presenting the content. There are a couple of reasons for that, which he has shared with me, is that it is a case that what to present and how to present it is not known to the participant. So it is good if we could engage one of the session based on this particular area, on to this particular factor, that what is to be presented, what are the points that you should consider before going into the presentation. Usually, it has been seen that the moment you are being asked to present, you are much concentrating yourself onto the topic, right? Particularly what are supposed to deliver. So you start preparing that particular topic, putting the text onto the presentation or presentation, make your presentation according. But that is not only the criteria for having a very effective presentation, right? So by keeping this particular objective in mind, we have framed today's session. So the points which I have already considered, that you all, uh, you all specifically, all participants of this particular session are uh, well versed with what is Microsoft PowerPoint is all about, right? What it will give to you, right? What sort of benefits are there of Microsoft PowerPoint, right? Mostly all of you are of a branch of interdisciplinary science. Basically, there are fellow from the field of education having a master of, already they did master of education, right? Likewise, so I'll try to make uh, presentation relevant to the people, those like, since I understand that this is like interdisciplinary class, but there are some people, those are specifically skilled in the art of education, right? So it is actually the challenge for me as well to present the appropriate content before the learned audience like you, who is doing exceptional work in the field of education. So we know that you all are aware with this PowerPoint as well. Okay. PowerPoint, creating PowerPoint, how effectively you can use this particular PowerPoint. Now, but we have to use this particular PowerPoint for the purpose of uh, presentation of research. I'll just check up with my internet because it is dropping right now. Just give me a minute.
Okay. Is my voice is audible? You can respond me. Yes, sir. Yes, sir. Fine. I'm very sorry that due to some technical glitch, I was not able to connect to you all. But we know that like here the task is to go with the presentation with respective to PowerPoint. Okay. So now, if you look at this presentation of the research, now normally, if you look at software approach, uh, there are two different approaches we are going to have. One is we have a Microsoft tool for uh, presentation, and other approach is we are going for open office. Okay, so these two options we have, Microsoft and open office. So in case of Microsoft, you have MS Office, uh, and this MS Office is proprietary, right? So what does it mean? It that it is you need licensing and all that kind of mechanism here. And in case of open office, you have you have a Linux-based system. That this is with the GNU public license. Okay, public license. So this is offered free. Okay. So then, in case of open office, you can go for presentation. You have a PowerPoint here as well, and there is a second option called Beamer. Okay, so Beamer, this is being preferred by the student. Those are going with latex. Okay, so the student those are going with latex, they're actually preferring this Beamer for the preparation of their presentation. Now, this is the approach that you can take, right? So you can create the PowerPoint presentation using these two approaches. The software you can collect, right? You can get this particular software. Now, if you look at this, this is giving you an idea about an information that the data is available everywhere, right? And your job is to interpret the data. Okay, interpret the data very properly. Interpret the data very properly. So this reminds me one beautiful story of elephant and seven blinds. So here the case is, if you look at this particular picture, you will come to know that the blinds are looking at the elephant. They are touching to the different parts, the organs of the elephants, and they are trying to interpret this particular uh, what they feel about the particular by touching the part, right? So they interpret this particular data very well. Okay, as per their knowledge. Okay, so they interpret the data. Okay, but the important fact is that every interpretation of the organ is very, very different than the actual. So it means that if there is a problem, X type of problem, then please try to understand you are not the only person who is looking at this particular X. There are several people those are looking at this particular X problem, right? So, and if there are many people those are looking at this particular X problem, the perception of those all people are different. Okay, so this you need to understand. Okay, normally you can see this particular case that when you are looking for searching for some kind of data over Google, so you query that particular data to the Google, and Google come up with the appropriate link. There are two ways or two solution happens, two activities you can see. One, by with your query, either you will get a result or you may not get a result. If you get a result, you feel happy that you got some kind of references to begin with. If you don't have got the result or link or the pages,
you feel sad that you don't have anything to refer again. So, but on the contrary, you start pushing your queries with different keywords so that you are in anticipation that some content should come. But eventually, if there is a no content, appropriate or relevant content found, you should feel happy that that particular problem is still unexplored problem. And if you start exploring that particular problem, you will be the first person who can prepare appropriate content to that particular problem and invite some kind of a collaboration onto for that. So it is like that. So that is a good step or beginning for having an innovative sort of work. Okay. So whenever you look at this, you see you need to understand that there are people those are going to contribute into the particular domain. Now, if you look at this interpretation, then several things happens. There are certain methods that are going to come right now. For if you start interpreting that data, uh, what are the important factors? You if The first important factor which you have is volume. What kind of volume of the data you have? Then second is what type of sources you are going to have, right? Source of this particular data. Then what okay, is data is containing some kind of errors or not? If there are no errors, then you can proceed with some sort of applying methods over it. Okay, methods over it, and these methods are giving you results in which the fraternity is interested in. So these results you need to interpret and bring it before the audience. Okay. So in order to handle all this kind of thing, I have come across with a very beautiful uh, presentation and would like to share with you all that there is a presentation which is available over the network, internet, and the presentation was given by uh, Simon Jones from Microsoft research team. And I find this particular content very, very appropriate for having a great research presentation and uh, how you can have a great research talk rather. Right. So please try to understand that talk without presentation never happens actually. Right. So you need to understand the need of the presentation while giving the talk. So talk provides the in-depth information of your content which you wanted to bring before the community, right? And the presentation will help you to be in line with the talk which you wanted to give, right? So this is really very important. So we'll go through this particular slides of Simon Jones, and we'll try to discuss the points which he has presented. And I personally feel that all the points which he has presented into this particular document are very, very important as far as budding researchers are concerned, so that they can manage their presentation very effectively. Okay, so we will switch among now two things with the points which we'll take from the this particular slide, and we'll have a PowerPoint presentation as well. So I will be shifting within the two different sections now. Now, if you look at the very first point, which is particularly defined, is that what is the need of presentation, say. Okay, so you need to understand uh, the need of the presentation. What is actually need? Why to present, right? So question is why to present. Okay, why? What are the reason for presentation? The simplest reason is that your supervisor asks you to present. That is why you are presenting, or it is a mandatory for you to present. That is why you are presenting, or
You wanted to bring some information before the audience. That is why you are presenting. So this answer you need to understand why you are presenting, why to present. So there are a couple of reasons. As I said, that if your supervisor asking you to present, that is why you are presenting, which is mandatory. Or if the presentation is mandatory, that is why you are presenting. Or you wanted to bring some important points before the learned audience, that this is important and you need to go, right? So why to present is, we understand presentation is communication. Presentation is always a communication. Please try to understand this particular point. Presentation is communication. Now, by communication, I means you are here to convey. Okay, you are here to convey. What you can convey? You can convey various things. Okay, the first, you can convey problem, right? You can convey approach. Okay, you can convey solutions. Okay, you can convey outcomes. Okay, okay. So these are what? These are some important points which you can convey. You can convey the problem. You can convey the approach. You can convey the solutions. You can convey the outcomes. The important thing is you can convey. Okay. But what we are doing, what we are conveying, we are conveying actually text. Okay, we are conveying actually text. I have seen number of presentation where students are putting lot of text, and when they are asked to present, they start reading entire slide from very first word to the last word present onto the slide. So where what they are conveying the text. Please try to understand that if we clearly undertake the principle of presentation, it is what? It is to communicate. So means you need to communicate whatever you have uh, mm, pointed out onto the presentation. And at the same time, the moment you are conveying, please try to understand that the audience is also reading the content, also going through the content which you are presenting. So the content which is present, which is available onto the slide, uh, they are actually the pointers, and you are trying to convey your experiences related to those particular pointers. Okay, so if you look at this, the general observation is you have a lot of text. Now this text has to be conventionally has to be converted. Instead of referring this, putting this is not at all appreciated that you should put a large volume of the text. You should convert this particular text into image form. Okay, so what does this is? This is we know that one image is equal to 1,000 words. Okay, this is what this is usually said, that one image is equals to 1,000 words. So it is always better that if you represent the text to the image. So this will help you to convey, right? This will help you to convey graphically. Okay, graphically or visually, uh, uh, graphically or visually. So this is important. Now, here you need to understand that why you should do this, because research is a communication, or whatever you do is like when you present, you are actually using a communication, right? And at the end of the day, when you present, have you got a feeling that I'm really glad for my presentation today, because the presentation went very well, and it has reached to the
all audience, do you have that kind of feeling every time whenever you come up with when you finish your presentation, right? Uh, try to get this particular feedback from your earlier presentation, so that will help you to build your next presentation more properly. Okay, so this is important, right? And uh, at the same time, uh, the moment you make your presentation very simple, it will reach to the audience very properly. And at the and most importantly, you should enjoy your presentation, uh, and you should have a fun with your presentation. So this is really very important. Right now, if you look at this, when you look at this, when you start doing this, where you understand the communication, you need to understand the purpose, right? Right. You need to understand the purpose of the presentation first. Okay. So now, if you look at your case, this purpose would be like in case of a student, the purpose could be, I am preparing this presentation for conference. Okay, this is one purpose. I am presenting this presentation for RAC. I am presenting the presentation for preparing presentation for DRC. I am presenting presentation for some kind of talk. Okay, likewise. Okay, so this is actually the underlying purpose, right? We know, but actually the purpose of presentation is to uh, convey an idea with the audience, right? Okay. What is this? The purpose of your research talk or your presentation is to uh, convey idea. Okay, right? Your talk is to convey the idea. But what people are doing is this, right? People try to impress the audience. This is important, right? The purpose of presentation is to impress your audience, right? So this is what is the purpose of the talk, is to impress the audience with your brain power. Okay, so this is one. Uh, Again, you need to show that the presenter usually try to show that you know everything about the particular topic. Nothing goes beyond the scope of your presentation as far as that particular topic is concerned, right? So which will the presenter will present that you can say na, larger than life kind of picture, that nothing goes beyond this particular presentation, and whatever is related to the topic, it is included into the presentation. It's like that. Okay. And most importantly, uh, in order to just justify how skillful you are in terms of the impression, usually presenter put everything, the technical details, jargon of the technical details into the presentation, rather keeping it more simple for the audience. They make it more complex, right? So your purpose of your talk is not to impress the audience, not to tell them that everything you know about your topic, not to present the technical details, but uh, it is it is for giving you an intuitive feel of your idea. Okay, what happens if you convey your idea? Right, the purpose of conveying your idea is always uh, inviting people. Right? If you convey idea, you invite the people. Invite people. By inviting people, what is going to happen? By inviting people, the collaboration is going to happen. Right. Now, this collaboration is with respect to what? The collaboration with respect to the problem that you highlighted
from a problem space. Okay, so the moment you start inviting a people, by conveying your idea, you are asking them to collaborate. And by collaboration, I mean that the problem that you have highlighted from a problem space, you want people to contribute into that particular domain, okay, in that particular area. So the moment you're doing it, how you're going to convey this particular this, right? So this is the problem, right? This is an interesting problem. This is an explored problem. This is complex problem, right? This is an interesting problem. This is an unexplored problem. This is the complex problem, right? Then this is the impact if the problem is addressed, right? So usually when like this can be like whenever you are being asked to present before RAC or DRC or likewise, there you write in very first presentation, you put a point like what is a motivation behind, okay? So rather putting a motivation behind, you should narrate a story like how you have approached to the particular problem, how you explored the problem, okay, how you identified a problem. So narrating a particular or setting up a actual proper narrative will help you to bind audience with respect to your particular topic. Okay, now if you look at interesting problem, unexplored problem, a complex problem, uh, this is the this is this is the impact of if this problem is addressed. Okay, likewise. So this is what this is helping you, that you are engaging your audience, right? Uh, you are not only engaging audience, you are igniting them to contribute. Okay, you are igniting them to contribute. So this is actually the purpose, right? So let's look at this, right? So the purpose of the talk is to give your audience an intuitive feel of your idea, make them eager to go through the volume of work that you have uh, done usually. So the moment you ignite them into your idea, you excite them into your idea, they will definitely go through the topic where or the publications that you made prior, right? So that will help to build the visibility of your particular work before the audience, right? And at the end, they should be satisfied that they find the time for your particular session. Okay. So this is really very important. So the purpose of the talk is to give an intuitive feel about your idea. You have to convey your idea. You need to build an eagerness in the mind of the audience. You need to engage, excite, and provoke them to contribute into the area and make them feel that uh, uh, give them a glad feeling that they have invested a right time into a right particular topic. Okay, before going to this, then the next part is like, okay, next part is the purpose is one. Okay, purpose is one. The next point is you need to understand the audience. You need to understand the audience, what type of audience it is. Okay, so for example, before setting up this particular lecture,
I had a word of discussion. I had a discussion with Dr. Suhas Patak, where I have asked him some questions related. Okay, sir, what kind of student strength that I'm going to have? How much students that are going to present? He told me that, sir, you will there are around 100 plus students. Those are going to attend this particular session. So I know that the audience, right? So I know the audience count, right? Count is 100 plus. Okay. Then I wanted to understand, okay, what is a diversity? Okay, so I came to know that it is an interdisciplinary section presentation. So I have students from education, I have students from fine arts, I have students from performing arts, and right, and likewise. So like interdisciplinary science is students are there. So accordingly, I need to place up my lecture, right, so that everybody can understand. So I need to understand the diversity now. But now see, this is for my lecture, right? This is my preparation about my lecture. Now what happens when there is a student like this, and this student is a research scholar, this is a PhD student, and this PhD student try to understand the audience. Now what kind of audience that this particular student is going to have? First, the research colleague. Okay, first is the research colleague. Okay, second is the experts, right? That experts from the area, right? Third, the scholars in front of them, the student that the research student is going to present the work. Usually, these uh, three types of audience that the scholar is going to have. Okay, because I have seen very few scholars, those are giving a public addresses. Okay, so fourth is like if you are going for open defense, where your Viva is being available for anyone who is interested in, right? So open defense. So in this case, you have a different kind of audience. Now, if you look at this audience, you are normally you want that like uh, you want that you want that the people should know what exactly things are, right? So you want that that the presentation has to be before the person those are skilled in the art, those knows the concept. See, if you are doing some kind of work into, say, if take a case, I'm a science student, particularly computer science student, and I am presenting before computer science people. So I know that there are 70 to 80% student, those are having a basic conceptual concepts of what I want actually to deliver, right? So I perceive that. Okay, so but this is not the case every time, no. So it is not necessary that every time you will get a learned audience, but still you need to manage yourself into this. So usually what happens that you need to get a feel of your audience. So every time what you would like to have that you should have a learned audience, so that the uh, conveying your idea, you should have a less effort. So if the people are from your same domain, you need to avoid the explanation, and you can reach up to those peoples very easily, right? So it is like that. So you want a comfort zone, that whosoever is attending my presentation, he or she should be from my same domain, right? Likewise. So and have gone through the earlier work as well related to my work. Right, this is usual way of understanding. So I have gone through all your earlier papers, thoroughly understand the relevant theory, uh, right? They are again they are very much interested into your work, what is happening into the latest development of your work. They are fresh, they are alert, they are ready for action. You anticipate this actually, right? uh, right, but uh, your actual audience
what they get, right? Basically, the actual audience in which to whom you are going to address is never heard you. Now, right now, the same thing happened with me. You have never heard me. If some of you would have heard me earlier, he will feel that, oh, Praveen sir is delivering a session, so I must attend. So this is what is a curiosity. And if you know the presenter this, before attending the session, then you can you are eager to that, right? But there is an audience, those are never heard of you, right? Uh, uh, and It may be a case that if you are being provided with the post-lunch session, then then the audience are little drowsy, right? So it's like this. So your mission is to wake them up, and uh, they should be attentive throughout your sessions, throughout your talk, and you should make them feel glad at the end of the session, that they really happy with the content which they have received within this particular uh, session, right? Whatever your presentation session is all about. Okay, so this is, so the moment you are aware of this, then this will certainly uh, puts a point that what to put in. What to put in means what to be included onto the slide and what should be avoided, what to put and what to avoid. So based on this audience only, you need to understand, right? So like say for example, if you're delivering a session with the experts, then you need to really decide that, oh, what is to be put. Okay, if you are presenting it before your research colleague, then you need to like decide, okay, these are my fellows. Okay, I know what is to be presented, right? If you are providing the content before the scholars, right, they are particularly juniors, you need to ignite them. So you need to decide what to be put so that all of them are getting ignited towards or inclined towards your particular idea. So what to put in, right? There is a very simple case, rather a very simple mathematics which is presented by Jones, is like you need to put 20% of motivation and 80% of your idea, and nothing is required more than this. So what to put? You need to put a 20% of your motivation and 80% of your idea. Okay, so only these 2 points you need to consider: motivation and idea. So it means what to put in is 80% of your idea into a presentation and 20% of motivation. Now, just to give you an idea, just to give you a reminder. So what you do is like what is being generally observed is 80% of relevant work. 10% my idea, 10%, 5% my outcome, 2% my contribution in terms of publication, right? And 3% is rest. Okay, so this is not appreciated, right? This is not appreciated. Rather, you should put 80% of your idea and 20% of motivation. Let us dig down this further. Okay. So as I already said that, okay, how you can present, right? The motivation is that why this particular problem is so important, why the problem is complex, it is a solvable problem or it is unsolvable problem, or this is the way this particular unsolved problem can become a solved problem, right? This is how you can
you can address this particular problem. This is what is your idea. Then you start asking people to contribute into the idea and make it more rational, right? Likewise. So before starting, actually, the motivation before starting your presentation, you have 2 to 3 minutes rather to engage your audience before they start. Okay, before they starting the dose of your presentation, that you they are thinking like, why should I go with this particular talk? What is the problem? Why it is an interesting problem? Does this talk describes worthwhile in advance, right? Or is it really good if I spend this much number of time, this much time to this particular talk, right? Likewise. So you have to think into this particular way. So the moment you are doing, as I already discussed with you, the moment you're discussing this, you should be able to identify your key idea. You should be very specific, absolutely very specific, and you should organize your talk around the specific goal. Which, if you look at the way we started, we set up a target goal, and this is how we actually wanted to uh, go with. Okay, so you should be very specific to the idea. You should be very specific, absolutely specific with respect to the idea, right? So you can go ahead with this. Okay. Okay. So why during the presentation, you should avoid shallow overviews, right? At all the cost of the presentation, right? So you should avoid that. You should usually avoid the overviews. You should avoid cut to the chase, right? So cut to the chase means like how you have presented all your technical jargons. Try to avoid that particular technical jargons, right? That will not lead anything, right? You should be very specific with your idea. And it is not necessary always that whatever the research contribution manuscript that you have or presentation that you have, it should cover everything. It should cover, it is okay if it covers a part of the presentation, okay, part of the work, right? So you can dig down, you go into the detail of that, and your presentation should convince the audience that this is how you can proceed. Okay, so uh, by putting the examples, you can motivate the work. You right, and the appropriate examples helps audience to get in the or helps audience to align with your target objective, and you can easily motivate the audience related to the work. You will be successful in conveying your basic intention, which is the target of the presentation, right? And you can easily illustrate your idea into the action, right? By providing them high and low, means by discussing both the cases, the extreme cases, as well as the simple case that is pertaining to a particular problem. At the same time, you are putting your effort into providing a shortcoming of the problem. Shortcoming, you should highlight those particular problems. Uh, so you should go ahead with this. mm, Put very relevant examples. Normally, whenever what has been seen that the moment you are being presenting with the your experimental part into the uh, mm, your presentation, you are not putting it clear, you are not putting a rationale behind why you have chosen the particular method for the work, right? So it is really extremely important that the basic rationale behind selecting this particular method has to be come forward, and that too with the example. So you should
set up a clear narrative before the audience related to the work, and that can be easily justified with respect to the examples. Okay, so you can go ahead with this. So what you should leave, right? If you know what is important, what to put in, that is 80% of your idea and 20% of your motivation, then what to leave, right? So this is really equally important. So what to leave out? So leave out is this, right? You should leave out leave out outline, right? It is actually not at all required. Okay, but I have seen many presentations where the outline of the work is being given, right? This is my presentation is organized, not necessary, right? So outline of the work has to be avoided. So no outline is required actually. No related work is actually required. Every time it is being seen, then 80% of the work is being presentation is actually around the literature work or related work, right? And very less contribution is being set onto the amount of work that the scholar has performed, right? So you need to do that. So you need not to present a related work, right? You absolutely must know the related work. You respond readily to the question answer, and likewise you should acknowledge the co-authors onto the title slide. It is like the moment you are discussing the result, at the footer side only you can directly write that this particular work is being presented at this particular conference, or the work is published into this particular journal. It's like that. Okay, so so important, right? It's like you should avoid such kind of a technical jargons. Nothing come out of this except wasting the slide, right? So rather than this is if you narrate, if you build a complete story related to the work would be appropriately described. Okay, so you need to omit the technical details every number of times. Okay. Now, what to do is like what to leave here. What to leave here first is related work you leave. Okay. Then outline you need to leave. You need not to go for outline. You need not to go for related work. You need not to go for uh, technical details. Okay. Hmm? You need not to go for a technical details. You need not to go for related work. You need not to go for outline. So these 3 points you need to. Okay. Now, if you do this, then what are the points that you should take care while presentation? While presentation, what are the points that you should take care? Okay. So simple case is just a moment. These are tips. Okay. Simple case is you should have a lot of enthusiasm while presentation, right? Okay. So this enthusiasm comes if and only if, see, while presentation, you should be enthusiastic. Okay, you should be enthusiastic. So this is possible if you are well, if you are well prepared for your presentation. If you are not prepared for your presentation, you feel yourself low, very low. You are not confident. If you are well prepared, see, if you are well prepared, you are happy, right? You are confident, you are fresh, right? You are excited to present. Got me? So you should be enthusiastic. So when you will be enthusiastic, if you are well prepared. Okay. Now, but
but you should avoid simple. In order to have this, you have to be enthusiastic. Avoid last minute edits. Right? Try to avoid the last minute edits of your presentation. Right? Try to spend much of your time for the presentation. Right? Before the moment you commit that you are going to have a presentation onto this particular target, this particular date, then let's start preparing your presentation well in advance. Avoid last minute edit, get a complete rest a day before the presentation, have a good sleep, sound sleep day before the presentation, have a review of your presentation once when you woke up, and then be ready for the presentation. So you should avoid the last minute edit. Right? So you don't, all right, you should uh, do this. Okay. Okay. The one more thing is that if you are enthusiastic now, see you make your audience very receptive, right? You make your audience receptive if you are enthusiastic. Okay, then you should be able, most importantly, you should be able to tone your voice. You should able to tone your voice. By this, I mean that you should be able to understand where to go high, where to go low, and where to be moderate. Right? So this is possible if you are well prepared with your presentation. So you can do this, right? So you can make people dramatically more receptive to you, what you are talking all about. Okay. Okay, so as I said that you should avoid the last minute edits. So you should prepare it well in advance. Uh, while during a talk, say if suppose you have come across with some question and answer, and you're not able to answer it probably, right? Right. So you should not be like be very much worried, right? But you can say that you can discuss it later on. You have noted that down, right? And you will come up with the solution, right? Okay. You will be like there is actually no apology to be taken, right? Because if you are not spending a good time for your presentation, definitely your preparation will not be proper. Right. So if you are saying like in most of the cases, sir, my computer was not working properly, last minute that Microsoft Excel got corrupt, my computer got corrupt, like why? Right. So it has no meaning, right? Putting those things, right? So do not apologize. Okay. So and there is a effect called jelly effect where like say if you are not prepared at all, then it can be easily understood by looking at you. By just see there is inability of breathe properly. You're not able to stand properly. uh, you're not your brain and actions are not in sync, right? So inability to operate the brain, right? This is usually going to happen, and this is happening because of the stress as well, uh, when you are not prepared, right? So usually before going to the presentation you should be very much prepared. Okay. So if this is the case, what to be done? Okay. So simple, having a deep breathing, right? Try to understand, try to learn from every of your previous talks, what has happened in my previous session. Say, for example, the same talk I have given to the science student as well during my presentation. So whatever the points that I missed in that particular talk, I'm putting it here, right? So I need to understand like what goes, what left in my particular talk,
right? So you can do that. You can adjust your talk accordingly, right? By just going through the previous talk. It is always encouraged that if you have a script of your presentation with you, right? So that script will help you that, okay, on particular slide, this is what the story that I'm going to highlight, and that particular story is not part of the presentation, right? So the presentation is containing a bullet point. So it is always good that if I have that particular story related to the slide with me, right? So it is good to have a script properly. You need to move around the people. Right now, in case of virtual classes like this, it's really very difficult to move around the people, but it is good to see that whether the participant count is properly there or not, whether it is went down, right, going low or likewise, or it is being increased or likewise. If it is going down, it means that the people are not finding well from your presentation, they are exiting from the room, right? If it is being increased, it means that people are receptive to your work, they are much inclined with what you are presenting, right? And accordingly you can do, right? In the meantime, you can, like, while going into this virtual kind of presentation, it is always good if you go through the chat window, start monitoring the chat, see that whether there are certain questions that are coming into a chat window, likewise, so that you can keep audience engaged. One more thing you can do to keep the audience engagement properly, that you can start pushing the some kind of poll during the presentation, right? And you can move up, right? So this putting a poll within the presentation will help the participant engagement, right, with particular your words. Okay, so the moment if you have a large audience sitting in front of you, it is always good that you move around, use your gestures, and likewise, instead of standing onto one particular podium, looking at the screen, and likewise. Okay, it's like that. Uh, and the last point is, it is always preferred, right? You should go for that. Okay. Uh, you should be facing towards the audience, always not towards the screen. You should know your material prior, right? Because it is understood that you yourself has put the time for preparing the presentation. If it is so, then you know the material. If someone else has prepared the presentation, then it is very difficult to accommodate or sync up with that particular presentation. Because I personally tell you, my personal view is that if you spend your time into preparing your presentation, you have a story running in your mind that, okay, this slide is there, and at this particular slide, I'm going to present like this. Okay, rather than if you ask someone to present your presentation, so he will present that presentation as per what he perceives, right? Not as per in line with you, right? So you need to put much of your time into correcting those presentation and likewise. Okay, so you know your material. You need to put your laptop in front of you and screen towards, uh, and laptop screen is towards you, rather just looking at the screen always, right? So it is like that. Do not point much, but when you do, point at the screen, not at the laptop. Okay, usually people got confused that where is the screen and where is the laptop. They point out to the laptop screen, assuming that the pointer is at the audience screen. So that you need to do. Right. For being heard, you should be very loud enough, right? You should speak very properly. As I say, already discussed with you, that you should be able to match up with the high-low notes of your uh, talk, right? Your talk, so that you can address that this is the important, this is not the, this is
what is actually important, right? Likewise, you should watch for the audience questions as well, right? So if you look at the questions, usually uh, my perception is that student is not at all interested into a question, but student looks question as a problem. That my teacher has, my mentor has asked me this much number of questions, right? So they are taking question as a problem, right? Plus, please try to understand that questions are not problem; they are golden opportunity for you, right? So by means of question, you can easily connect with the audience. So this is really very important. So you should connect with your audience, right? Uh, Specifically, you should encourage questions during your talks, right? So, right, you allow participant to ask question, and for this you should be very specific with your presentation timing as well, right? So it is absolutely essential for you to draw certain amount of time for the purpose of question answer session. If the student or the participation did not ask any question during the presentation, you should give them an equal opportunity to come up with their questions. Now there are two things happens. If there are no question, you should understand that nothing has reached to the audience, right? Or everything has reached to the audience very properly. Second, you fail to engage participant into your talk, because if they are interested into your talk, they definitely come up with the question, because there are certain kind of agreements onto a topic, there are certain disagreement to the topic, or rather disagreement, there is a need of extended clarification onto a topic. So it is actually very important that you should get a question onto the presentation which you made. Okay. Uh, During the presentation, you should have a eye contact with the speaker, right? Being an audience or a member. It's not the case that it's not necessary that every time you should be presenter. In some of the cases, you are participating in the presentation as a listener. So while going through the presentation, you should try to understand the presentation. You should participate into the course of presentation, right? But at the time of asking the presentation, you should have eye contact with the speaker. It should not be that you are looking at different location and you are asking some question to the speaker. This is not at all appreciated. You should have a proper eye contact with the speaker, right? You should ask questions very specifically. It should not be very uh, 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 not relevant questions, right? You should not ask the not relevant question. This will actually discourage the presenter, right? That you are asking a question which is not at all related to the work that the scholar has presented, or a presentation presenter has presented. Try to be very specific with this. Okay. So while presenting your slides, you try to have a wireless presenter with you. Test that it checks, it works properly. Check that you have a multiple backup of your presentation, right? So means if it is not on, if unfortunately your laptop crashed down, you have alternative source of your presentation, that is either onto a email, connected to an email, or it may be onto the pen drive likewise. So try to have that kind of thing, right? So any just to avoid a discomfort during the presentation. Okay, while presenting your slide, uh, you should reveal the content one by one, uh, unless there is a punchline. Okay, so if there is a punchline, you can directly start with the punchline, or you can reveal your content, start doing it like one by one, right? So you should have an animation effect. You can use animation effect if you required it as an important part. Uh,
And most importantly, at the end of the presentation, you should finish the presentation with a very beautiful quote, if possible, but you should finish your presentation within the time frame. Okay, so you should be able to manage your time in a such a way that that you should either, if required, you can extend the presentation, or if required, you can curtail down the discussion of the presentation. Most of the student, the general question was like, sir, I want to present for 30 minutes. How many slides do I need? Okay. So it is for 30 minutes. I can say like 10 slides would do. For 30 minutes, you can have 30 slides, or for 30 minutes, you can have 60 slides likewise. It is totally up to you, like how far you can explain, what is your oratory skills, what are your oratory skills, how wonderfully you can uh, convey the idea, and likewise. So based on that, you can take the support of those much number of slides for your work. But at the end of the day, you should finish within the time. Right. So okay. So this is what is all about the topic, right? So you can do that. Uh, as far as the tips are concerned, uh, these are the tips. While presenting, you should have a good energy, right? While presenting, you should follow this particular first tip is, at the time of presentation, try to understand less is always more. Okay, less is always more means, instead of putting a bulky text onto the image, bulky text onto the presentation, try to have a simple image, because we understand that image speaks 1,000 words. Okay, so this is important. You should be very, very professional at the time of presentation. So your attire should be very proper, right? You should have a very good dress up, right? So you should be very professional at that. You should strive for balances, right? Balances means you should strive for balances by understanding the audience, the kind of audience. There are some people, those are expert. There are some people, those are new to the work. There are people, those are, they might not be related to the work likewise. So you should have a strong balance for that. Okay. Uh, you should have a proper fonts and the text sizes while preparing the presentation. I have seen that in many cases, I have seen that every slide is of different text, different color and different font style, and likewise. Right? It looks very shabby. It is always good if you have a theme, and you prepare a presentation with respect to the theme. Fifth, the important point is you should concentrate onto the visual side of the presentation, right? Rather onto the textual side, you should concentrate onto the visual aspect of the presentation. It is always good if you practice delivering of the content among, like, before presentation, final presentation, or likewise, if you start practicing it before your friends and colleagues, that is always encouraged, because practicing a presentation will help you out in deciding the points that are important for the presentation, right? You can again decide the normal course of delivery as well. Okay, so these are important points. So you should concentrate on to the visual aspect. You should practice the delivery of the content. You should be very, very much ready for the presentation, because presentation question is golden opportunity, right? So question is always a golden opportunity. Okay, you can seek the professional help if required for preparation of the presentation. If you are not very good at using computer software like PowerPoint and that, so you can take a technical help, professional help for preparing all your presentations. Okay, so these are what
these are the certain tips by which you can start preparing your presentation. I am done with my presentation now. I kept 10 minutes for all your question answer session. So thank you very much for your patience listening. We can come up with the question answer sessions now. Yes, you can post your questions within the yeah. See, I have seen one chat by Anil Kamble that he said that English, Marathi and इंग्रजीचा भाषेचा उपयोग करावा. So I'm extremely sorry, Anil, that I gone through only English. Actually, I overlooked the chat. I got engaged within the presentation. So chat मी पाहणं झालं नाही. त्यामुळं ते राहून गेलं. Otherwise, I would have used other languages as well. Yeah, any more questions if you have, that would be nice. There is a one question from question that if we are at a distance place and want to present online, only voice will do. Certainly will do. But it will be very monotonous. Okay, you should be like you should at least share the screen, at least have a presentation and voice all together, but only voice is not encouraged, right? So this is there. We actually avoid videos. If I start video, I don't mind in starting my video. But if we avoid video here just to save the bandwidth, that's it, right? We don't want to like have any trouble in during a presentation. That is why we go for this. Otherwise, if you have a very good network and very good bandwidth, you can go ahead with putting a video as well. Okay, not a problem. There is will it be possible to share PPT? Yes, Ritesh, I will share PPT with. I have already, in fact, I have already shared content with Suhas Patak sir. He will share with you all. Okay, along with PPT. Okay, yes, along with PPT. That is right. Time limit for presentation. Usually you know that presentation. If you are defending your Viva OC examination, it is around 30 to 45 minutes. Likewise. Yes. So based on that, you can do that. Any specific question that you have in your mind and would like to face-to-face presentation and online presentation. I would encourage face-to-face presentation would be more appropriate. Online presentation is also good because you don't have alternative sometime. So whatever the platform that is available, and you should be very comfortable. I want to ask one more question. Yeah. Sir, if we are presenting our presentation and means facial expressions of the audience, that is a very big, what I can say, hurdle for us. Like if we are seeing positive response from their side, then it is okay. That we think that we are right
we are going right. And if some kind of negative, yeah, if they are smiling or something like that, and that gives depression to us. Means how to overcome with that facial expressions. See, there are facial expression comes due to some couple of reasons. First, the first reason is it might be a case that you fall onto a wrong zone. This is wrong zone. By that I mean uh, the audience is not at all intended audience. This is one, right? Due to that, you can get such kind of. If it is a learned audience, or if you are with the target audience, then the facial expressions, if they are going bad, it means that you are not reaching audience very properly, right? So this is because of a couple of reasons. Is that you need to see whether your presentation is very bulky, whether your presentation is adding a very in-depth technical details, and for understanding the technical details, I must spare some additional amount of time, or I personally feel that it is very complex. Okay, and or it may be a case that you are finding it correct, but the person who is skilled in the art find it that this is really very basic. Okay, so it is always encouraged that you should properly understand where you are presenting and what is actually expected to be get presented there. So this is that, and I tell you, important is you should not lose actually your momentum there, right? That is what is actually the challenge is. You need to bring all people onto a platform where they must be interested into your. So try to go for putting stories and build a narrative in a way that they should get interest into this, right? So that is the only thing that you can do. Okay, I hope I reached to your question. There Yes, is sir. a, Thank you so much, sir. yeah. There is one question. Hello, sir. If the question comes from the audience which is out of the topic, then how to react? Or if we don't know how to react? It's very simple. If it is not in line with the topic which you are discussing, it is you should first. The good part is you should appreciate the question and uh, mm, and and convey that since the work is more specific or in particular with this particular area, so the question which is being asked is out of uh, the target domain which you are actually diving in. Okay, so this is how you can easily defend that sort of question. Okay, anyone else? Any more question you have? Let me have a chat window. Ritesh has asked the same question which I have already discussed. What should be the number of PPT slides? It is completely up to you how good you are, uh, how how far you can discuss, how well you can discuss, and how strongly you can convince people, right? So it is up to you. So may say, for example, if you look at my slide, I have one slide written, right? 3 or 4 slides are actually blank. So it is to completely up to you that how you are handling your content properly, right? Okay. On the contrary, I have other slides for reference as well, right? So I am moving in between 2, 3 slides, 2 windows here. One is the by presentation from Microsoft research team, and one is the point presentation where I am about to discuss. It's all about that. Yeah. Actually, sir, like my question was a little bit additional to it. Shall I ask it, sir? Yeah, please. Sir, nowadays it is being said that the PPTs is the old style and we should go with more with the interactions the way you did.
But also it was being suggested in one of the earlier sessions that our thesis size should be minimum of around 200 pages and should not exceed more than 400 pages. So in that manner and in that context, I wish to be like, a little bit specific, like what should be the proportion to the number of pages that we have in our thesis? There is no, it is like how well you are organized with the content. It is not the case that, see, writing a thesis is like a book, and how do you restrict the author that you should convey your book within this much number of pages? It is hardly possible, right? It is like how well you are contented with your content. That is the only thing. So that is why it is always said, you cannot have such kind of proportionate mechanism here. I am good. See, I am a good orator. I take usually 2-3 slides and more of the examples. That is good for me, right? So it's True. like that. Yeah, it's like that. It's like that. It is always good if you have that kind of things with you. Yeah. Sir, one question for that, but if I can have it, is regarding what should be the ideal timing that we should expect, sir, of the interaction, the final RRC? It is expected that you should get a 30 to 35 minutes, right? Including the question answer session, provided you are much occupied with your content only, rather putting outline, reviews, right? And likewise. So you just gone through your presentation. You may came across that how much amount of time you have spent onto a problem statement, how much time you have spent onto the motivation, and likewise blah 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 blah, previous work and all that, and how much amount of time of your presentation you spent on your work, right? So you find that hardly 20% of time you spent onto your work. Now, if you go with this 20% and 80% of theory, you will find that 80% of work you are talking about, right? So if it is, say, 30-minute presentation, you are almost talking about 24 minutes onto the amount of work you have made, right? So that makes a sense, right? So it is all about like how well you prepare and how well you organize yourself for the presentation. Time usually 30 to 35 minutes, including question answer session. That is what is in science. We are very. The defense also. Pardon? Does it mean the defense as well that we are supposed to do it like? Yeah, you are supposed to do, like in case of defense as well. It is hardly plus 10 minutes, not more than that. Okay. Yeah. Sir, what would be the ideal chapter that we need to discuss, like out of the 5? It is always good if you discuss with your mentor. Right. My perception is different. Your mentor may be a different mindset. He may allow you to have a 6 or 7 chapter. I am allowing my student to have just 5 chapters. Right. So it's like that. Okay. Out of 5 chapters, 3 chapters are to the work that the student is doing. Right. It is all about like how you are preparing your content and that. Yes, Bala Sahib, what you wanted to ask? Sir, meanwhile presentation, some audiences ask questions, and we get our link broken while presenting. No. This will never happen. That is why presentation is important. Right? Presentation will help you to keep your discussion in line with the way you want to engage. Right? My question is that shall we give time to discuss on the question after the presentation? It is all about how you wanted to have a discussion, course of discussion, right? So before starting a presentation, you can say like we can take question and answer at the end of the presentation. This is one you can do. Or if suppose during the presentation, if someone has asked a answer, try to give him or her an abstract way of giving an answer, and the detail onto this can be
discussed after the completion of the presentation, that also you can take. Right. Okay. You Thank you, sir. should not discourage that audience now that he or she has asked you a question and you straight away denied that particular question by not answering it. Okay. Right? Thank you, sir. Right. Yes. Thank you, sir. Yes. Okay, so that's it. I'm done with the presentation now. All yours. At the end, I think I should stop here. I would like to thank Dr. Suhas Pathak for giving me this opportunity to have a interaction with you all. Thank you very much. And I would like to thank coordinator of this pre-PhD course, Professor S.N. Deshmukh sir, for giving this opportunity. Coordinator of Director of Pandit Madan Mohan Malviya Mission, Teachers Training Center, Professor Satish Patil for making this resource available for me. Thank you very much. थँक यू सर. अतिशय व्यस्त वेळेतूनही आपण वेळ देऊन अतिशय व्यवस्थित आणि एका उपयुक्त विषयावरती विद्यार्थ्यांना आपण मार्गदर्शन केलं. धन्यवाद सर. आपले HRDCच्या वतीने आणि प्री PhD कोऑर्डिनेटरच्या वतीने आम्ही आपले आभारी आहोत. ऑल पार्टिसिपेंटच्या वतीने सुद्धा आभारी आहोत आणि अपेक्षा करूया की यामधून पार्टिसिपंट्स काही बोध घेऊन आपले प्रेझेंटेशन चांगले बनवतील. तर ही आम्हाला खात्री आहे सर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. थँक्यू सर. Thanks. Thank you, sir. Thank you so much. एक 10 मिनिटाचा ब्रेक आहे तुम्हाला आणि आपण 12:45ला सॉरी 11:45ला आपण दुसरं लेक्चर सुरू करूया. Okay, sir. Okay. Thank you, Okay, sir. sir. Okay. Okay, sir. थँक्यू सर. Okay, sir. Thank you.
मॅडम काम सुरू झालेलं आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीच्या काळात तुम्हाला आणि त्याच्यामध्ये हॅलो, नमस्कार मॅडम. दोन मिनिटं सर, 2च मिनिटं. ओके, 2 मिनिटं फक्त. यांना सुट्टी कधीपासून यांच्यासाठीच हा, नमस्कार सर्व पार्टिसिपेंट्सला. काही महत्वाची सूचना आहे. उद्या जरी रविवार असेल तरी दोन्ही पण वेळेस आपला क्लास होणार आहे. आपले इलेक्शनच्या फेजमुळं जे 2 क्लासेस पुल ऑन झालेत, तर त्याचा एक क्लास आपण उद्या पूर्ण करणार आहोत. तर उद्या सकाळी आपला क्लास होईल. तुम्हाला त्या संबंधी लिंक टाकल्या जातील. जी लिंक उद्या तुम्हाला टाकली जाईल ती फक्त उद्या पुरती राहील, एवढं लक्षात ठेवायचंय. आपली जी रेग्युलर लिंक आहे ती आहेच आहे. उद्या आपण प्री पीएचडी कोर्स संबंधीचे रूल्स रेग्युलेशन्स या संबंधित सर्व गोष्टीवरती एक महत्वाचं लेक्चर सकाळी 10 ते 12 आणि तसंच दुपारी सुद्धा आपण अरेंज केलंय. त्यामुळे सर्वांनी लक्षात ठेवायचं की उद्या सुद्धा तुम्हाला जॉईन व्हायचं आहे. तुम्हाला संध्याकाळी त्याची संबंधीची लिंक टाकली जाईल किंवा अर्ली मॉर्निंग सकाळी सुद्धा टाकली जाईल. तर याची सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे. ओके सर, हिंदी में टुमारो देयर इज ऑल्सो लेक्चर in morning 10 to 1 and 2 to
4, 5. So because of election phase, we have to cope up the last 2 lectures. That's why tomorrow we have 2 lectures. Okay, sir. Okay. जी. Tomorrow's link is separate. हे सगळे लक्षात ठेवायचे. The link of tomorrow morning is separate. Okay, sir. That you will share, sir. Yes, definitely. Okay, sir. Yes. Pathak sir, Yeah. at morning you schedule any different thing? A discussion forum will be there. What? No, different, madam. Different, na? Okay. Yes. Because at management science and commerce we schedule the some discussion forum because students We have scheduled what about how create PowerPoint, Google Form, YouTube links, all these things. Tomorrow you are going to be scheduled. Yes. Okay, fine. Right now, I welcome to Dr. Kaveri Lad, madam, as a coordinator of interdisciplinary. Madam, welcome in pre-PhD coursework. Now I request to Deepika Patil, ma'am. Please introduce Dr. Kaveri Lad, ma'am. Yes, sir. Good afternoon to all fellow research scholars. I, Deepika Patil, representing Dr. Babasaheb Ambedkar Maharashtra University, am delighted to extend a heartfelt welcome to Dr. Kaveri Lad, ma'am, whose illustration career and achievements enrich the academic department of management science. Dr. Lad's journey is marked by impressive repertoire of qualifications, teaching experience, and research contributions. With a comprehensive understanding of subjects spanning from Android to statistical methods, her expertise undoubtedly fosters a vibrant academic environment, offering invaluable insights to our students. Her commitment to advancing knowledge extends beyond the classroom, evident in her prolific research endeavors. Dr. Lar's numerous published papers and active participation in conferences and seminars underscores her dedication to pursue a scholarly excellence. Moreover, Dr. Lar's multifaceted engagement in various universities, committees, and administrative roles reflects her unwavering dedication to institutional development and academic governance. Her involvement in curriculum development, accreditation processes, and administration responsibilities exemplifies a holistic approach to academic management. In essence, Dr. Kaveri Sridhar Lad's contribution stands a testament to her commitment to academic excellence and institutional growth. It is with great pleasure that we extend our heartfelt appreciation and warmest welcome to her. Please join me in welcoming Dr. Lad to our academic community at Dr. Babasaheb Ambedkar University. We are honored to have your expertise and look forward to your invaluable contributions to our academic discourse. Thank you, ma'am, and welcome. Thank you so much, Deepika. Just give me a 5 minutes. I'm going to share my PPT here. Just 5 minutes. I think my screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Thank you so much, Deepika. As you introduced me very nicely, thank you for that. And I also thanks to Pathak sir who give me an opportunity to deliver some content in front of you in this pre-PhD course 2024. I also would like to thank to HRDC also who has given me an opportunity to work as a faculty coordinator like an Pathak sir. Today, I am going to be covered and one important topic for today's session is that how to develop the research paper, or we can say that how to write the research paper. And I think everybody know that it is then compulsory for all of us that yeah, you all guys that you have to publish
at least two research paper in the UGC Care journal, right? And I hope many of among you, you may be published the research paper in various UGC Care journal. I hope so. Can I know that how many researchers are here? They have published the research paper in any UGC Care journal. Anyone? No? How many researchers are here? They have published their research paper in the journal, UGC Care journal. I think Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, where you published? In UGC Care journal? Okay, I think she is not able to explain or say where it is published, I not remember right now, but 5 papers I published in journal. Very good, Yeah. very good. Yeah. Now see, generally, while we are writing an paper, all of you that you all are going to be submit, and I think your research thesis means you are very well known about the publishing and research paper in the different journals, right? But today's session little bit will be same. Already you know everything, but we are going to be just revise some important concepts regarding the how you are going to be develop the research paper, right? So today we will see in a today's session we will see that what is an IMRAD format, then what is an important points regarding writing of a research paper. And Ma'am, sorry to disturb, but if you can use Hindi, English, and Marathi, will be better. ओके मीन्स आपको हिंदी में बात करना पड़ेगा. Okay, ठीक है, कोई issue Ma'am, नहीं there है. are like Marathi students also, Marathi, Hindi, and English. So if you Okay, can okay. mix up the language. हाँ, अच्छा ठीक है, मैं मिक्स कर देती दोनों भी, ठीक है. मराठी एंड मैं हिंदी और मराठी मिक्स कर देती, ठीक है. दोनों में मिक्स कर देती, मराठी और हिंदी. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम रिसर्च पेपर कैसे लिखे, राइट. आणि मराठी बोललं तरी चालतं का, सगळ्यांना समजेल? नाही मॅम, इंग्लिश पण आहेत. इंग्लिश Yes, ma'am. Ma'am, English is I also. think Hindi will work, ma'am. हिंदी will work. Yes, ma'am. Okay, fine. I will speak in हिंदी. तो हम आज के इस पे जो कंटेंट्स देखने वाले कि सबको मालूम है कि रिसर्च पेपर की क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है. और जनरली हम क्या करते हैं कि रिसर्च पेपर ये वैरी होता है कि जैसे कि स्ट्रीम वाइज वैरी होता है. तो व्हाट इज क्वालिटी, जो साइंस की जो पेपर लिखने की जो स्टाइल होता है वो स्टाइल हमारा मैनेजमेंट के साथ हम नहीं कंपेयर कर सकते. या ये जो कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर साइंस का जो कोई पेपर रिसर्च पेपर हो सकता है या फिजिक्स का हो सकता है या दूसरा कोई नैनो टेक्नोलॉजी का हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर और अपना जो एजुकेशन और सोशल साइंस का जो स्ट्रक्चर है वो कभी सिमिलर नहीं हो सकता है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि साइंस में मेजॉरिटी आपके एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड रिसर्च पेपर होते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट लेके पर्टिकुलर मटेरियल लेके आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और उसके जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशंस आपको नोट करके उसके ऊपर आपको कंक्लूजन निकाल के फिर आपको पब्लिश करना पड़ता है. ये जनरल साइंस का फॉर्मेट होता है. लेकिन जनरली जो हमारा मैनेजमेंट होता है या सोशल साइंस होता है वहां पे आपका पेपर पब्लिश करने का फॉर्मेट लिटिल बिट अलग हो सकता है. बट ऐसा पूरा की पूरा तो सब अलग हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं है कि पार्शियली बहुत सारी सिमिलरिटीज भी दोनों भी टाइप में दोनों भी फैकल्टी में हो सकती है. तो क्या सिमिलरिटी हो सकती है, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो हम आज के सेशन में देख लेते हैं. आज का जो सेशन है उसपे मैं
ये फॉर्मेट का है, IMRAD फॉर्मेट क्या होता है, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग राइटिंग रिसर्च पेपर कि उसके क्या क्या ध्यान में रखना है अपने को। एक स्ट्रक्चर होता है। अब आपको तो मालूम है कि जो PhD का थीसिस होता है उसका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एवरी सबको मालूम है। टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, कीवर्ड्स होते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, RM होता है। ये सब चीज सिमिलर वहां पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है। लिटिल बिट पब्लिकेशन का, अगर पब्लिश किया वाला कोई साइंस का पेपर आप देखते हैं तो उसका लिटिल बिट आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स ज्यादा यूज किए वाले रहेंगे वहां पे, और उसका बिफोर एक्सपेरिमेंट एक कुछ एनालिसिस होगा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट एक कुछ एनालिसिस होगा, राइट। तो हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज एन IMRAD फॉर्मेट, ये होता क्या है। व्हाट इज एन आई बोले तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन मीन्स इट इज एन प्रॉब्लम, राइट। आपका आपका अब आप जिस टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं उसका प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू स्टडी, आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपका प्रॉब्लम आपसे आइडेंटिफाई हो गया है तो कोई भी, अभी आप PhD कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आपका काम भी, बहुत सारा काम भी हुआ है, तो ये सब चीज आपको मालूम है। अगर हमको कोई एक प्रॉब्लम मिला है जिसके ऊपर हमको अभी स्टडी करना है, तो पहले तो हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या क्या मेथड्स होना चाहिए, ये प्रॉब्लम मुझे किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर प्रॉब्लम मिला, सिर्फ प्रॉब्लम मिल के उसकी तरफ हम देख नहीं सकते, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है जो मेथड यूज करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी वो मेथड कौन से हो सकते हैं, मेथड कम्प्लेक्स वैरी होंगे आपके, स्ट्रीम वाइज वैरी होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आपके मेथड्स लिटिल बिट डिफरेंट रहेंगे। अगर आपका लैंग्वेजेस का है तो लैंग्वेज में तो ज्यादा करके ये प्रॉब्लम का स्टडी नहीं करते, वो जो ऑलरेडी हुआ है उसके ऊपर स्टडी करते हैं वो। एक मिनट, पार्टिसिपेंट म्यूट योरसेल्फ। राइट, मेथड अप्लाई करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम मेथड यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एन सम रिजल्ट, राइट। आपको कोई ना कोई वो रिजल्ट वहां पे होता है, और वो रिजल्ट क्या होता है कि आपकी फाइंडिंग होता है, राइट। अगर आपका एक्सपेरिमेंट, अगर आपका ये है एक्सपेरिमेंट लेवल का, अगर आपका कोई रिसर्च है और वो रिसर्च पे अगर आप पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल फील्ड में आपको रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, राइट। जैसे आपका रिजल्ट ऑब्जर्वेशन करके जो रिजल्ट आपको मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू राइट एन फाइंडिंग, आपको उसके ऊपर आपके रिसर्च के फाइंडिंग्स लिखना पड़ता है, राइट। एंड उसके बाद उसके बाद कि व्हाट इज एन डिस्कशन, डी means discussion, what you have to do, you have to, it is means what is it is what do this finding means आपकी जो फाइंडिंग्स मिला है आफ्टर अप्लाइंग अ लॉट ऑफ मेथड्स ऑन योर प्रॉब्लम, एक रिजल्ट आपको मिला है, तो वो रिजल्ट का डिस्कशन आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, दैट विल बी योर लास्ट फॉर्म ऑफ एन डी। तो व्हाट इज एन IMRAD format? It's a very simple. Questions will be in your hand. On that questions, you have to apply some particular methods, right? Methods can be in the any form. या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही होना चाहिए। आपका बाय ऑब्जर्वेशन होगा, बाद कुछ डेटा होगा, उसके ऊपर हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर सकते हैं कि वेदर व्हाट डेटा यू हैव कलेक्टेड फॉर योर रिसर्च पेपर that is an valid, and whether the statistical tool is applying on that particular data very properly. And then after that, either by applying any experiment method or by applying any statistical tool, even though you are applying you are performing some experiment on your data, then also there is a need to apply some statistical tool, right? कुछ भी करो बट फाइनली आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, और वो रिजल्ट को लेके जो भी फाइंडिंग्स आपके हैं, तो वो फाइंडिंग का फाइनली आपको आपके ओन लैंग्वेज में उसको डिस्कस
करना है. The discuss means it's not like an oral discuss, but you have to write in a very proper manner with considering all the criteria of publishing the research paper in different journal. So now, what is an important point you have to keep into the mind while you are trying to write an research paper? The first important point is that know your audience and write for the very specific to audience. Now, अगर आप एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका पेपर एक्सपेरिमेंट होके और साइंटिफिक होके ज्यादा मीनिंग नहीं रहेगा उसको, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा और आपका जो अप्रोच है वो बहुत ही एजुकेशनल पर्पस, मतलब आपका बहुत ही मेन स्ट्रीम है, एजुकेशन स्ट्रीम इज वेरी मेन स्ट्रीम. तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आपके लोगों को ज्यादा उसका फायदा होना चाहिए. अगर साइंस का कोई पेपर हम एजुकेशन वालों को बोलते कि तुम्हारे काम का है, तो ऐसा नहीं हो सकता. यार आपका जो कोई पेपर है पार्शियली हो सकता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही काम का नहीं होता है, बट उसको ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है. कि साइंस का पेपर कोई है आपका कंप्यूटर साइंस में कोई पब्लिश किया वाला, आपको पार्शियली काम में आ सकता है कि आपके नॉलेज, एडिशनल नॉलेज के लिए आपके काम में आ सकता है. बट अगर उसको आपके पेपर में अगर आप कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज हो जाती है, क्योंकि दोनों की भी दोनों की रिसर्च प्रोसेस जो है लिटिल बिट वैरी होती है स्ट्रीम के हिसाब से. तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आप किसके लिए पेपर लिख रहे हैं, आपके ऑडियंस क्या है, कि आपका जो पेपर है कि जनरली पूरे एजुकेशन स्ट्रीम के लोगों को या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चर को उसका फायदा हो आपके रिसर्च का, या आप जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं उसका ऑडियंस आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से आपको पेपर लिखना चाहिए. ये पहला आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और इसमें मैं थोड़ा ऐड कर पाऊंगी आपको कि अगर आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, कि अगर रिसर्च टॉपिक आपका बहुत ही चाइल्ड चाइल्ड लर्निंग पे है आपका रिसर्च टॉपिक, और अगर आप बहुत ही मतलब कॉलेज के स्टूडेंट के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं और आपका टॉपिक है चाइल्ड लर्निंग, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, वहाँ पे डिफर करेगा. तो क्या डिफर करेगा ये, कि आपने लिखा है तो आपका रिसर्च टॉपिक है दैट इज अ चाइल्ड रिलेटेड, और आप लिख रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कि आपका रिसर्च टॉपिक से भी आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन थोड़ा सा उसको उसके स्पेसिफिक होना चाहिए. अभी दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यूर सुपरवाइजर प्रोफेसर इज नॉट हियर टू टीच यू द बेसिक ग्रामर एंड स्पेलिंग. ऐसा नहीं हो सकता. आपको ये भी मालूम है कि ठीक है, साइंटिफिक अगर कोई हम रिसर्च कर रहे तो वहां पे थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि लिटिल बिट वेरी, मतलब गलती हो गई तो इतना कंसिडरेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका रिजल्ट जो डिपेंड होता है वो एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड से, जो एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आया वाला है उसके ऊपर उनका फाइंडिंग एंड रिजल्ट एंड कंक्लूजन होता है. तो आपका जो रिसर्च होगा, जहां तक मैं थोड़ा समझ सकती हूँ एजुकेशन का या इंटरडिसिप्लिनरी का, मैं कुछ रिसर्च पेपर्स देखती हूँ तो वहां पे मुझे ध्यान में आता है कि आपका जो पेपर होता है या रिसर्च होता है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च होता है. एक्सपेरिमेंट कम होता है. मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट आपका कैसा रहता है कि आप डेटा सिलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग एन क्वेश्चनर. आई थिंक अब बहुत मेजोरिटी वैसा होता है कि प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर आपका कोई तो भी स्टैटिस्टिकल टूल आपका अप्लाई किया वाला रहता है. बट वैसा वहां पे वो अप्लाई करने के बाद फिर आपका जो कंक्लूजन है वो आप आपके लैंग्वेज में लिखते हैं. तो लेकिन वहां पे भी आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज पे कोई गलती नहीं होना चाहिए. और हर चीज में आप आपके जो रिसर्च गाइड है वो रिसर्च गाइड आपके छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालेंगे या निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है. बट वो उनका रोल नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको बारीक बारीक चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है. पहले डू नॉट टर्न इन द फर्स्ट ड्राफ्ट. मतलब आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पहला
कोई ड्राफ्ट मतलब जो आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिख रहे हैं वो आपका फाइनल ड्राफ्ट हो सकता है नहीं, क्योंकि बहुत बार आप आपका फाइंडिंग या आपका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर बार बार कोई चीज अप्लाई करते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं, तो बहुत बार वेरिएशंस भी आपके आ सकते हैं। तो ऐसा कभी अपने को कंसिडर नहीं करना है कि जो मैं फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो दैट विल बी माय फाइनल ड्राफ्टिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको वो एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग योर रिसर्च पब्लिकेशन मेनी टाइम्स यू हैव टू चेंज योर ड्राफ्ट। आपका जो भी पेपर के कंटेंट, रिसर्च पेपर के कंटेंट आपने बनाए हैं वो आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। जनरली जो रिसर्च पेपर होता है तो वहाँ पे आपका जो लिखने की जो ये होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, तो जनरली थोड़ा माइल्ड लैंग्वेज आपने यूज करना चाहिए। तो ज्यादा स्ट्रांग कोई वर्ड यहाँ पे आपके रिसर्च पेपर में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कोई ना किसी से वो हर्ट कर देता है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि ज्यादा बड़े बड़े वर्ड हमने यूज नहीं करना चाहिए, कि डू नॉट यूज द मोर वर्ड वेयर फ्यू विल डू। मीन्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यूटिलाइजेशन वर्सेस यूज। तो जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि एज एन गुड क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर, कि आप अगर छोटे छोटे वर्ड अगर आपके रिसर्च पेपर में अगर लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। रिसर्च पेपर किस लिए होता है, ये बताने के लिए नहीं होता है कि हाउ फ्लुएंटली आई हैव रिटन एंड माय पेपर इन इंग्लिश। आपका बहुत हेवी वर्ड अगर आपने यूज किया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हाउ सिंप्लीफाइड, बाय व्हाट सिंप्लीफाइड वे ने आपने रिसर्च पेपर लिखा है, राइट। तो आपको आपके रिसर्च पेपर में आपको बहुत सिंपल वर्ड यूज करना चाहिए कि जो नॉर्मल पर्सन को भी उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो आपको बड़े बड़े वर्ड आपके रिसर्च पेपर में यूज नहीं करना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कोट कर रही हूँ। जनरली और क्या क्या इम्पोर्टेंट है रिसर्च पेपर के लिए, तो यहाँ पे और कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि यूज एन आउटलाइन टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज एंड राइटिंग। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विदाउट एनी आउटलाइन, आउटलाइन ही नहीं है कुछ भी, और आप सिर्फ लिख रहे ऐसा नहीं होता है। एनी एनी आइडिया आपके पास है, कुछ भी आइडिया है तो उसको अच्छी तरह से उसका आउटलाइन पहले डिफाइन करो। तो आउटलाइन का मतलब क्या है कि बाबा कोई प्रॉब्लम आपको मिला है, वो प्रॉब्लम रियल में है क्या, वो प्रॉब्लम पहले उसको चेक करो कि नहीं ये प्रॉब्लम रियल में है। तो अगर चेक करना है तो आप थोड़ा पायलट स्टडी कर लो। पायलट स्टडी करने के बाद आपको समझ में आता है कि जो प्रॉब्लम आपने एज्यूम किया है या आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम है, रियली वो प्रॉब्लम है क्या। अगर हमने थोड़ा पायलट स्टडी कर लिया, हमको समझ में आता है कि यार रियल में मैं जो एज्यूम कर रही हूँ वो ये प्रॉब्लम है क्या, पहले तो हम चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आप आउटलाइन की तरफ आ जाइए कि वहां पे आपको समझ में आता है यहाँ पे, अरे नहीं जो मैंने पायलट स्टडी किया है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट किए हैं, वो ऑब्जर्वेशन में जो मुझे फील हो रहा है वो चीज वहां पे है। तो पहले उसको आउटलाइन अच्छे तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि हाँ ये रियली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है तो फिर आगे की चीज आती है। तो प्रॉब्लम मिला है आपको, रिसर्च फिर उसके वो प्रॉब्लम के बारे में आप लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, उसके ऊपर कुछ काम हुआ है कि नहीं, वो आगे की स्टेप है। बट आपने जो भी प्रॉब्लम कंसिडर किया है रिसर्च पेपर के लिए, उसकी वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है। और वैलिडेट हो गया वो, तो उसके बाद आप उसका आउटलाइन बनाना चालू कर दीजिए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज द आइडियाज इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। और उसका भी एक सिंटैक्स है, एक फॉर्मेट है, हम वो देखते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि यू हैव टू अरेंज योर आइडियाज इन अ वेरी प्रॉपर वे, राइट। आपका जो रिसर्च पेपर होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आपके रिसर्च पेपर में होते हैं। तो जब रीड करता है कोई आपका रिसर्च पेपर तो वो देखता है कि यार ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, नो को इसको नहीं मैं रीड करता, वो स्किप कर देता है। तो उसका भी कुछ एक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करना चाहिए। अगर जहाँ पे कोई एक पैराग्राफ हम अगर कोई इमेज फॉर्म में बता सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। कि बहुत बड़ा पैरा बताने से अच्छा कि हमें उसके रिलेटेड कोई एक इमेज वहां पे डाल देंगे, और इमेज
उसके नीचे 2-3 सेंटेंस हम लिख देंगे। तो आपको ये भी कंसिडर करना है कि आपका जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। इफ यू ऐड सम इमेजेस दैट विल बी गुड, उसके रिलेटेड आपको इमेजेस क्या करना है, ऐड कर देना है। नाउ नेक्स्ट है कि अभी ये तो बताने की चीज नहीं है, बट बहुत बार ये होता है कि हम लिखते, हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ वाला रहता है, हमारा पूरा रिसर्च होता है। अभी आपको सबको ये मालूम होगा कि जनरली हम थीसिस लिखना कब चालू करते हैं, सबको मालूम है। हम डेटा कलेक्ट करते हैं पहले, मतलब रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू होता है, प्रॉब्लम होता है, डेटा कलेक्शन हम करते हैं, और जनरली हम क्या बोलते हैं कि नहीं अभी हमारा डॉक्यूमेंटेशन चालू है, डिसर्टेशन लिखना चालू है। तो डिसर्टेशन लिखना है मतलब आपका काम, जो रिसर्च काम है वो कंप्लीट हुआ है, ये एज्यूम्ड होता है। हाँ, तो हम लिख रहे, फिर कौन से टेंस में लिख रहे हैं, अभी आपका रिसर्च हो गया है, उसका आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो सोचना पड़ेगा कि अरे ये पास्ट टेंस में मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम, रिसर्च काम मेरा कंप्लीट हुआ है, आई एम नॉट डूइंग, इट हैपेंड, मेरा रिसर्च पूरा हुआ है। तो आपका टेंस का भी थोड़ा वहां पे ख्याल रखना पड़ेगा जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं तब। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि कैप्शन, आपके जो कैप्शन जो आप टेबल को देते हैं या फिगर को देते हैं, तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। एक टेबल वैल्यू आपका कुछ तो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका टाइटल कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा है। सर बहुत बार होता है वैसा कि योर टेबल नेम एंड फिगर नेम मस्ट बी very relate to your what is the values are in the your research table, जो डेटा कलेक्ट किया आपने। म्यूट करिए, कौन है? तो यहाँ पे आपको वो भी केयर लेना है कि आपका टेबल और फिगर के जो कैप्शंस होंगे वो भी वेरी प्रॉपर होना चाहिए। अभी हम जब साइट करते हैं, रेफरेंसिंग जो देते हैं, तो हम रेफरेंसिंग का भी आप साइटेशन जब होता है, तो यहाँ पे ज्यादा किस पे साइट करना है आपको, आपका इंटेंशन कहाँ पे होना चाहिए, फोकस ऑन आइडिया। हम आपका जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो आइडिया आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई की है, वो रिलेटेड ही आपके रेफरेंसेस होना चाहिए। आप जब साइट करते हैं, आप जब रेफरेंसेस देते हैं, तो इट शुड बी रिलेटेड विथ योर आइडिया। नहीं तो ये ऑथर मेरा फेवरेट है तो चलो इसको हम साइट कर देंगे, ऐसा नहीं होता कि साइटेशन बढ़ाने के लिए हम उसको साइट कर रहे हैं। तो इट शुड नॉट बी हैपन व्हाइल यू आर राइटिंग एन रिसर्च पेपर। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज दैट show us, don't tell us, right? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि आपका जो रिसर्च पेपर जो है उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, राइट? ऐसा पैराग्राफ फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा हो जाता है कि नहीं, आप हम बता रहे हैं कि ये आप ये बता रहे हैं कि नहीं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम बता रहे हैं। तो इफ यू represent your data in the form of and what images and graphics that will be good, that can be easily understand to the reader or the persons who are going to be read your research paper, right? Here see the यहाँ पे डेवलप अ स्ट्रैटेजी फॉर योर डिसीजन, दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने पहले बताया आपको रिजल्ट के बारे में। अभी सिर्फ आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और उसके ऊपर आपने कोई भी एक ये पेपर है, ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम पे मैंने रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद मुझे ये वैल्यूज मिले, ये मेरे फाइंडिंग्स है, इतना करके हमने नहीं छोड़ना चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है वो प्रॉब्लम के लिए, वो आपके रिसर्च पेपर में आपने मेंशन करना चाहिए कि व्हाट, अगर प्रॉब्लम है तो इस पे कौन सी स्ट्रैटेजी आपने खुद ने डेवलप की है कि जिससे ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि सपोज स्टूडेंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपका कि दे आर यूजिंग मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, ये आपको प्रॉब्लम ध्यान में आ गया है कि ये प्रॉब्लम क्यों मोबाइल यूज कर रहे हैं। अगर आपने प्राइमरी डेटा अगर रीड किया है, प्राइमरी डेटा आपके पास आया है और वहां पे अगर आपको मालूम हो गया है कि
कि उनका क्लास अटेंड करना ये इंटेंशन नहीं होता है, गेम खेलना अगर इसके लिए इंटेंशन बच्चों को होता है, इसीलिए वो मोबाइल को ज्यादा लाइक करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होगा आपको कि आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जो गेम्स है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब ये आपकी स्ट्रैटेजी है। तो आपका जो रिसर्च पेपर का जो लास्ट कंक्लूजन होगा या फाइंडिंग्स हो गए, तो आपके रिसर्च पेपर में आपने क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे सजेस्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी आप दे रहे हैं, या ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करेगी, ये आपको मेंशन करना चाहिए। दैट विल बी गुड रिसर्च पेपर में अगर आप कोई स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी कोई दूसरा जो रिसर्चर है आपकी स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। मतलब आपने जो स्ट्रैटेजी या मॉडल डेवलप किया है, तो दूसरा कोई पर्सन आपका मॉडल उठाएगा और आपने जो स्ट्रैटेजी या मॉडल आपने डेवलप किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, वो पहले ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर आता है तो उसके आगे आपका रिसर्च कैरी ऑन होते रहेगा। बट वहां पे मॉडल ही नहीं दे रहे कोई आप, तो वो मॉडल ये एज्यूम करना क्या फिर हर किसी ने कि नहीं आपने जो मॉडल डेवलप किया है वो काम ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। कि आपने जब वो टेस्ट किया तो वो मॉडल मॉडल चल सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मॉडल वो स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। तो अगर आपने आपके रिसर्च पेपर में अगर कोई स्ट्रैटेजी मेंशन की है या मॉडल मेंशन किया है, तो आगे वाले जो रिसर्चर है कि दे कैन अगेन टेस्ट वेदर द व्हाट स्ट्रैटेजी यू डेवलप, व्हाट मॉडल यू डेवलप टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज गोइंग टू वर्क वेरी फाइनली। तो क्रेडिट आफ्टर ऑल वो आपको जाने वाला है, भले उसका आगे उसने एक्सटेंड किया है रिसर्च, बट आपने जो मॉडल किया है वो मॉडल पे वो आगे काम करता रहता है। बहुत सारे लोग उस पे काम करते हैं, और जब आपके आपके मॉडल पे या आपके स्ट्रैटेजी पे कोई काम करता है तो आपकी वैल्यू वहां पे बढ़ जाती है उसका, क्योंकि आपको रेफर कर रहे हैं लोग, आपको साइट कर रहे हैं, आपने जो डेवलप किया है उसके ऊपर उसकी ये चेक कर रहे हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या नहीं, तो वर्क कर रहा है मीन्स इट्स गुड, वो आपको क्रेडिट जा रहा है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी और मॉडल होना बहुत जरूर होता है कि जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं। बाद में यहाँ पे एक दिया है कि जब आपको फीडबैक भी आता है बहुत बार, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है, वो रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद उसकी ऑथेंटिटी मतलब आपका कितना रियल पेपर है, उसका एक रिपोर्ट आपको सेंड कर देते हैं वो आपको, कुछ कमेंट भी वो आपको सेंड कर देते हैं। तो वो जो कमेंट और आता है उसको हमने थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, अरे कि लोगों ने मेरा क्या पसंद आया, लोगों ने कि मेरा मेथोडोलॉजी पसंद आया है, या मेरा मॉडल पसंद आया है, या मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है, तो वो आपको फीडबैक देते हैं, कमेंट्स देते हैं। अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया है वो पर्टिकुलर जर्नल को, तो दे विल गिव यू एन फीडबैक, कमेंट भी देते हैं उसके बारे में। इवन वो आपको वहां पे मार्किंग भी रहता है कि परसेंटाइल भी देते हैं आपको कि आपका ये टॉपिक अच्छा लगा है जिसको इतने परसेंट दिए जाते हैं, तो उसको हमने थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। अभी जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं कोई भी, तो अभी सबको आपको मालूम है कि मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बाद में मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो एवरीबडी नो कि हर रिसर्च पेपर का टाइटल तो होता है, वो तो मैंडेटरी है। आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो आपने टाइटल दिया नहीं, बट बिना टाइटल का कोई रिसर्च पेपर नहीं होता है। बट जनरली हम क्या करते हैं कि पहले रिसर्च टाइटल देते हैं और फिर हम बाकी सब चीज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। एक्चुअली आपको प्रॉब्लम क्या है वो देखना है, उसकी मेथोडोलॉजी अप्लाई करना है, डेटा कलेक्ट करना है, उसका हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, जो भी है आपको पूरा फाइंडिंग निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकालना है, और एक्चुअली उसके बाद आपका टाइटल डिफाइन होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने स्टार्ट किया है एक थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट भी ये लास्ट कंसेप्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी आपका लास्ट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका टाइटल डिसाइड होना चाहिए। हम पहले क्या करते हैं कि पहले ही हमारे रिसर्च पेपर को टाइटल दे देते हैं। अभी रिसर्च पेपर को टाइटल दिया कि वो हिसाब से हमारा काम चालू हो जाता है, मेरे टाइटल को क्या मैच हो रहा है, मेरे टाइटल को क्या मैच हो रहा है। तो एक्चुअली वैसा नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉब्लम है, आपके प्रॉब्लम पे थोड़ा आप स्टडी करो, वो प्रॉब्लम वो आइडिया पहले किसी ने की है या नहीं की है तो उसने क्या नहीं किया है, मुझे क्या करना है, ये आपको लिटरेचर ऑफ रिव्यू या इससे समझ में आ जाएगा। लेकिन
सब काम होने के बाद उसको प्रॉपर कैसा आपको टैबुलेट करना है, कैसा पेपर में आपको रिप्रेजेंट करना है, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। सब काम आपका वो रिसर्च का आइडिया का होगा। तो आपको सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा, सबको मालूम है। मैं फिर आगे है हम और डिटेल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में देखेंगे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए, वहां पे क्या क्या आना चाहिए। बट आपके रिसर्च पेपर में आपका एब्स्ट्रैक्ट आना चाहिए, इंट्रोडक्शन आना चाहिए, देन लिटरेचर ऑफ रिव्यू भी, आपने कितना क्या क्या पढ़ा है, मेथोडोलॉजी आपने क्या यूज किया है। तो वो हमारे अभी रिसर्च में ये हमारा मेन होता है, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मीन्स इन शॉर्ट द रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब आप कौन सी सैंपल टाइप यूज, सैम्पलिंग मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं। आपका आपका डेटा कौन सा है वो भी आपको डिसाइड करना है कि आप प्राइमरी डेटा पे रिसर्च कर रहे हैं या सेकेंडरी डेटा पे रिसर्च कर रहे हैं। योर मेथोडोलॉजी शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर, राइट। मेथोडोलॉजी में बहुत सारी चीज आती है। मेथोडोलॉजी में आपका आरएम आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स आएंगे, वहां पे हाइपोथेसिस क्या फ्रेम कर रहे हैं आप, वो भी आएगा। यहाँ पे मेथोडोलॉजी में आपको और भी एक चीज ध्यान में रखना है आपका, कि आपके आइडिया को, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड आपके हाइपोथेसिस होंगे। ये भी प्रीवियस लेक्चर में आपका हुआ होगा। तो ये मेथोडोलॉजी शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर। आपको बहुत प्रॉपर वे से आपको मेथोडोलॉजी को डिजाइन करना है। और आपका मेथोडोलॉजी अगर प्रॉपर है तो रिजल्ट डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट आ जाएगा, रिजल्ट भी प्रॉपर आ जाएगा। और रिजल्ट अगर आपका एक बार बनाया, आपका रिजल्ट आउट हुआ, तो बाद में आपका रहता है डिस्कशन। एक्चुअली डिस्कशन क्या है ये भी हम देखते हैं कि डिस्कशन होता क्या है। आगे उसका डेफिनेशन में बोल दूंगी, और डिस्कशन में आता क्या है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। बाद में आपका कंक्लूजन होता है और यहाँ पे रेफरेंस होता है। तो आप बोलेंगे मैडम फिर आप जो स्ट्रैटेजी बोल रहे थे वो कहाँ पे आ जाएगा, या मॉडल कहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम डिस्कशन डिस्कशन करते हैं तो कंक्लूजन आप देते हैं, डिस्कशन के बाद कंक्लूजन देते हैं, कि आप कंक्लूजन के बाद भी आप बोल सकते हैं कि ये मेरा एक मॉडल रहेगा, या ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रहेगी जिस ये प्रॉब्लम को काम कर सकती है। मतलब वो आप वहां पे भी डाल सकते हैं कंक्लूजन के बाद भी, राइट। और लास्ट में होता है आपका रेफरेंसेस, कितने रेफरेंसेस आपने आपके रिसर्च पेपर के लिए यूज किए हैं। नाउ अभी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है सबको मालूम है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है आपकी स्टडी का, जो भी है आपने पूरा जो रिसर्च पेपर लिखा है। जनरली ये क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टडी और मेथोडोलॉजी और रिजल्ट एंड फाइंडिंग, शॉर्ट शॉर्ट में रहता है उसमें, राइट। और नीचे फिर हम कीवर्ड्स भी देते हैं। जनरली अगर आपने रिसर्च पेपर देखा तो नीचे आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। वो कीवर्ड्स क्या बोलते हैं कि मेजोरिटी इस रिसर्च पेपर में आपने किस पे फोकस किया है। तो बहुत हम 3 या 4 या 5 कीवर्ड वहां पे हम लिखते हैं, राइट। तो अभी ये अब्स्ट्रैक्ट में जनरली क्या लिखना चाहिए, हमने हमने कुछ भी नहीं लिखना चाहिए वहां पे। वहां पे क्या लिखना चाहिए आपका, कि आपका स्टडी का पर्पस क्या था, एक फ्रेमवर्क क्या है आपका स्टडी का, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, और आपके रिसर्च जो क्वेश्चन था, जो जिसके ऊपर आपने रिसर्च पेपर लिखा है, इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन वहां पे देना है। और थोड़ा आपको उसका ब्रीफ बैकग्राउंड भी, वो रिसर्च क्वेश्चन का बैकग्राउंड ब्रीफ देना है। बैकग्राउंड क्यों ब्रीफ देना है, तो कहीं ना कहीं आगे आप इसका रिसर्च गैप लेने वाले हैं, कि क्वेश्चन ये था, इसके ऊपर इतने काम हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे ये मेरा रिसर्च गैप है, इसलिए थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड भी देना वहां पे जरूरी होता है। अभी आपने तो आपका ऑलमोस्ट 2-3 चैप्टर तो आराम से हुए होंगे, तो इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं बताती हूँ कि व्हाट इज एन लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। कि आपकी जो भी इशू है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर आप कुछ जो पहले रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च कौन से भी फॉर्म में होगा। एक तो सेकेंडरी डेटा तो जनरली होता है, बट कभी कभी आपको कुछ रेडीमेड जो लाइव डेटा भी मिलता है आजकल। मतलब अभी डेटाबेसेस इतने लाइव होते हैं, गूगल पे अगर देखते हैं आप, तो डेली जो भी आपके डेटा स्ट्रीमिंग होता है वो भी आपको मिल सकता है, वो भी आप आपके रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू कैसा होना चाहिए कि इट शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक ओनली। और यहाँ पे
जनरली आपका जो, देखो, अगर आप कोई प्रॉब्लम का लिटरेचर ऑफ रिव्यू ले रहे हैं, तो आपके प्रॉब्लम के कुछ पॉजिटिव भी पहला काम हुआ होगा, कुछ निगेटिव भी हुआ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको निगेटिव वाला ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। कि हमको सिर्फ बताना है पोलाइट वे से कि इस ऑथर ने इस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ तक रिसर्च किया है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे हो सकता है। तो उनकी रिसर्च पे कोई हमको कंट्रोवर्सी ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है। सिर्फ उन्होंने जो काम किया है उसका काम आपके रिसर्च प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं लिटिल बिट को रिलेट करता है, वही आपको लिटरेचर रिव्यू में आपको लेना है। तो ये प्रिकॉशन लेना है आपको कि कोई भी हमको लिटरेचर रिव्यू नहीं करना है। लिटरेचर रिव्यू हमको सिर्फ हमारा जो रिसर्च पेपर है वो रिसर्च पेपर के रिलेटेड लेना है। तो यहाँ ये भी काम सबको मालूम है कि कैसा करना है। थर्ड मैंने बोला था आपको कि मेथोडोलॉजी, राइट। और ऑलरेडी मैंने पहले थोड़ा इसके बारे में बताया है कि मेथोडोलॉजी में क्या क्या होता है। एक्चुअली मेथोडोलॉजी क्या बोलता है आपको कि वेदर यू आर, आपका जो रिसर्च पेपर है वो रिसर्च पेपर आपका सेकेंडरी डेटा पे रिसर्च पेपर है या प्राइमरी डेटा पे है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हर बार सेकेंडरी डेटा पे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपका प्राइमरी भी हो सकता है। अभी प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, आपको सबको मालूम है। और ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ प्राइमरी डेटा पे ही कुछ स्टैटिस्टिकल टूल लगा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। अगर कोई डेटा आपको सेकेंडरी डेटा है जो रिपोर्ट फॉर्म में आपको अवेलेबल है, तो उसके ऊपर भी हम अलग अलग मेथोडोलॉजी लगा के उसका कंक्लूजन कर सकते हैं। अभी अगर प्राइमरी डेटा लगता है, प्राइमरी डेटा पे अगर आपका रिसर्च पेपर है, तो मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि आपका सैम्पलिंग मेथड बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बहुत बार ये होता है हमारा रिसर्च टाइटल, आपका रिसर्च पेपर का टाइटल कुछ और होता है, आप सैम्पलिंग मेथड आपको समझ, विदाउट स्टडी आप सैम्पलिंग की सैंपल मेथड कौन से उसका स्टडी हम नहीं करते हुए हम बोलते कि नहीं हम अभी रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं। लेकिन हर बार रैंडम सैम्पलिंग आपका काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा आपका रैंडम सैम्पलिंग? आपके हिसाब, आप कन्वीनियंट वे से आपको जो लगता है वो लेंगे। आपका कन्वीनियंट वे बोलता है कि यहाँ से 5 लेता, वहां से 5 लेता, ऐसा नहीं होता। वो आपके प्रॉब्लम जो भी है आपने डिसाइड किया है, उसका ऑडियंस क्या है, मैंने पहले बताया कि उसका ऑडियंस आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑडियंस में भी आपको वो ऑडियंस के लिए कौन सी सैम्पलिंग मेथड बहुत अप्रोप्रिएट रहेगी, ये आपको आरएम में डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं तो रिसर्च पेपर लिखना है, ये कुछ भी हमने कंसिडर नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। कि आपको सैम्पलिंग मेथड का बहुत प्रॉपर वे से सिलेक्शन होना चाहिए, और सिर्फ सैम्पलिंग मेथड का यूज आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है आपको, उसमें भी आपको पॉपुलेशन एंड सैंपल पे भी बहुत फोकस करना है। आप जब पेपर में लिखते हैं कि ये मेरा ऑडियंस है, रैंडम सैम्पलिंग मैंने सिलेक्ट की है, और व्हाट इज एन अबाउट द पॉपुलेशन, तो आप बहुत बार हम ये लिखते हैं कि ये अननोन पॉपुलेशन है। मेरा रिसर्च पेपर में मैंने अननोन पॉपुलेशन कंसिडर किया है। अब ये बहुत ही फेक लगता है, ऐसा लगता है ऐसा कैसा हो सकता है। इन्होंने तो रिसर्च का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, मतलब ये लोगों में गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपका पॉपुलेशन को फिक्स करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, जो चीज है कि जो काउंट हम नहीं कर सकते, उसका पॉपुलेशन इतना मैटर नहीं करता है। बट अगर कोई आपका रिसर्च पेपर रिलेटेड टू, अगर कॉलेज के स्टूडेंट है, 11th 12th के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं पॉपुलेशन अननोन है। कैसे क्या अननोन हो सकता है यहाँ पे पॉपुलेशन? क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कॉलेजेस का रिकॉर्ड होता है, हर कॉलेज में कितने एडमिशन है उसका भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो आपको पॉपुलेशन को लेना और उसको बहुत प्रॉपर वे से रिसर्च पेपर में उसको मेंशन करना, ये बहुत जरूरी होता है। और फिर पॉपुलेशन मिलता है तो सैंपल के बारे में भी हम ये नहीं बोल सकते हर बार मैंने 5% सैंपल लिया है पॉपुलेशन के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। या नहीं नहीं मैंने 10,000 मेरा पॉपुलेशन है और मैंने 100 सैंपल्स लेते, ये आपके रिसर्च पेपर को क्वालिटी को इन्हांस नहीं करेगा। अगर 10,000 पॉपुलेशन है आपका, तो आप कैसे क्या बोल सकते हैं कि मेरा 100 सैंपल है? कुछ ना कुछ आपको जस्टिफिकेशन आपके रिसर्च पेपर में देना पड़ेगा
नहीं तो वो रिसर्च पेपर की जो रियलिटी है, ओरिजिनलिटी जो है रिसर्च पेपर की, वो कंसिडर नहीं होंगी। रिसर्च पेपर में आपके मेथोडोलॉजी में आपका पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग बहुत मैटर करेगा। तो यहाँ पे आपको जब रिसर्च पेपर में आरएम हम मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं तो वेरी क्लियरली आप लिख दो कि व्हाट इज द एरिया ऑफ योर सर्वे। आप एरिया डिफाइन करो, ऑडियंस डिफाइन करो, सैम्पलिंग मेथड रिसर्च पेपर में लिखो तो मैंने ये सैम्पलिंग मेथड यूज किया है, ये मेरा पॉपुलेशन है, ये मेरा सैंपल है। और सैंपल भी उसका जस्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी बोला आपको, मैं ये नहीं बोल सकती कि 10,000 में से 100 ले आए, उसका जस्टिफिकेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक फॉर्मुलेशन लगाना पड़ेगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि अननोन पॉपुलेशन पे कौन से फॉर्मूला काम करता है टू गेट द अप्रोप्रिएट सैंपल, और नॉन पॉपुलेशन पे कौन सा फॉर्मूला काम करता है, सब आपको यूट्यूब पे या बुक्स में कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। तो आपके रिसर्च पेपर में आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लीनली मेंशन करना है कि मैंने सैंपल क्यों 100 लिए है, या मैंने ये फॉर्मूला लगाया है तो ये फॉर्मूला के हिसाब से मेरे सैम्पलिंग फॉर एग्जांपल 200 आ रहे हैं। तो 200 आ रहे हैं तो इट कैन बी 210, 220, right? 195 can be valid, but as according to your formulation, if sample size is then 200 and you are saying that I have collected the data from 100 with respect to the population, then it the validity of that your research paper is going to be decreased. वो अच्छा रिसर्च कंसिडर नहीं होगा, आपका रिसर्च पेपर कंसिडर नहीं होगा। तो देयर शुड बी एन जस्टिफिकेशन ऑफ योर सैम्पलिंग सिलेक्शन इन द रिसर्च पेपर। मेजॉरिटी मैंने देखा है कि ये मेंशन नहीं होता है, लेकिन ये मेंशन करना चाहिए। उसके बाद आपको वहां पे जो भी सैम्पलिंग, जो भी डेटा आपने सिलेक्ट किया है, वहां पे अप्रोप्रिएट आपको टेस्टिंग टूल यहाँ पे लगाना है। टेस्टिंग टूल आप बोलेंगे मैडम हमारा तो रिसर्च वैसा नहीं होता है कि हर बार टेस्टिंग, बट कोई भी रिसर्च ले लो, अगर आप कोई प्राइमरी डेटा पे काम करना चाह रहे या कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे टेस्टिंग लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम परसेंटेज से कोई कंक्लूजन आपके रिसर्च पेपर में निकालना वो ठीक नहीं है, क्योंकि अपने डेटा है। आप कोई भी, ठीक है आपको नहीं आता है टेस्टिंग, हो सकता है कि आपका स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड नहीं हो सकता है, अब कोई भी स्टैटिस्टिकल पर्सन को क्या कर लीजिए वहाँ पे हेल्प ले लीजिए और वहां से कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस वहां से आपको निकालना है यूजिंग टेस्टिंग टूल, और वो मेंशन करो वहां पे कि मैंने ये टेस्टिंग टूल लगाया है और ये हिसाब से मेरे ये वैल्यू आए हैं, राइट। उसके बाद होता है, मैंने बोला है कि यहाँ पे होता है आपका स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट रहता है रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होता है सबको मालूम है, टू प्रेजेंट द फाइंडिंग। आपको आपके आपके जो भी काम किया है, जो भी आपने टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो भी हाइपोथेसिस फ्रेम किए थे वो हो सकता है एक्सेप्ट हो सकता है, इसका भी रिजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि रिजल्ट आपको आपके फाइंडिंग के अकॉर्डिंग आपको आपके रिसर्च पेपर में प्रॉपरली मेंशन करना है। और आपका जो रिजल्ट होता है ये बहुत ही आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्पेसिफिक होना चाहिए। कुछ भी ऐसा कुछ रिलेशन नहीं रख रहे हम। मैं पहले बोला है कि आपका ऑब्जेक्टिव का रिलेशन हमेशा आपका रिसर्च टॉपिक पे होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम पे होना चाहिए। फिर आपका मेथोडोलॉजी का रिलेशन आपका ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए। आपका जो डेटा प्रिपरेशन होगा, टेस्टिंग होगा, डेफिनेटली वो करेक्ट आ जाएगा। और फिर जो भी टेस्टिंग होने के बाद जो आपका रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली वो भी बहुत आपका मेथोडोलॉजी के साथ रिलेट होगा। तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक रिजल्ट होना चाहिए कि जो आपने मेथोडोलॉजी यूज की है उसके स्पेसिफिक आपका रिजल्ट आपको रिसर्च पेपर में मेंशन करना है या राइटअप करना है। यहाँ पे है नेक्स्ट है आपका डिस्कशन। अभी डिस्कशन में क्या होता है कि आपको अगर कोई कमेंट देना है तो आप कमेंट दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी कोई ओन अंडरस्टैंडिंग है, मैंने बोला है, आप आपका खुद की स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं यहाँ पे, मैंने बोला है कभी पहले। आपका कोई आइडिया होता है, आपका कोई मॉडल होता है तो वो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिस्कशन में।
और कोई अगर अचानक कोई आपको लगता है कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे रिसर्च में, हो सकता है कि अगर जब ऑब्जेक्टिव आप लिख रहे हैं और हाइपोथेसिस आपने एक लिया है, जब डेटा कलेक्ट किया है तो आपको ध्यान में आ गया था, अरे ये भी मैंने तो कंसिडर भी नहीं किया था ये ऐसा कुछ होने वाला है। बट डेटा कलेक्ट करने के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज आपके सामने आ रही है, तो आप डिस्कशन में लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग मेरा तो ये क्या रिसर्च टॉपिक नहीं था, बट मैंने जब रिसर्च पेपर में मुझे ये फोकस करना था, बट मुझे ये भी मिला है कि ये भी मेरे एक्सपेरिमेंट में, मेरे रिसर्च में ये भी एडिशनल चीज मुझे मिले। तो आप वो अगर मिले है तो वो आप यहाँ पे डिस्कशन के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। Conclusion. What is in conclusion is nothing but it is the sum up of your findings. आपके जो भी फाइंडिंग्स है, आपके फाइंडिंग्स बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान में रखना है आपको। फाइंडिंग्स आपके 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, क्योंकि ये फाइंडिंग्स आपके कंप्लीटली आप कितने टेबल्स है, कितने आपके ग्राफ्स है, उसके ऊपर आप जनरली फाइंडिंग हम रिसर्च पेपर में भी लिखते हैं। अभी रिसर्च पेपर में फाइंडिंग अगर आपके 5-6 आ रहे हैं, अभी आपका थीसिस में बहुत सारे आएंगे, लेकिन रिसर्च पेपर में अगर आपके 5-6 आपके फाइंडिंग्स आ रहे हैं, तो आपका कंक्लूजन कभी भी 5-6 लाइन का नहीं होगा। आपको समअप करना है उसको, 5-6 जो आपके फाइंडिंग्स आए हैं उसको समअप करके एक मीनिंगफुल 1 या 2 सेंटेंस आपको वहां पे कंक्लूजन में लिखना है कि ये रिसर्च पेपर से एग्जैक्ट क्या आपको बताना है, ये रिसर्च पेपर का कंक्लूजन क्या है, ये आपको वहां पे बहुत स्पेसिफिक लिमिटेड वर्ड में वहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद आपका होता है रेफरेंसेस, राइट। अब रेफरेंसेस क्या होता है? रेफरेंसेस में सबको मालूम है कि अलग अलग हमारे स्टाइल्स होते हैं, साइट करने के स्टाइल्स होते हैं। एपीए भी होता है, एमएलए भी होता है, अभी ये चिकागो भी बोलते हैं, कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के हैं। तो जनरली हमारे लिए जो यूज होता है वो होता है एपीए। जनरली अभी आप गूगल पे जाएंगे और एपीए आप साइटेशन मशीन पे जाके साइटेशन मशीन करो आप गूगल में जाके और एपीए करो, तो जनरली हमारे लिए जो यूज होता है, जो स्टूडेंट और जनरल एजुकेशन प्रोफेशन के लिए जो यूज होता है, हम एपीए यूज करते हैं। तो जनरली ये तो कंसेप्ट आपको रिसर्च पेपर थीसिस में भी आएगा कि आप कौन सा साइटेशन मशीन यूज किया है, साइटेशन स्टाइल आपकी कौन सी है। और वहां पे हमारे लिए थोड़ा मुसीबत हो जाता है कि हमको मालूम ही नहीं होता है कि कौन कौन से साइटेशन मशीन है जिससे हम हमारा रिसर्च साइट कर सकते हैं। तो लास्ट में एक है बहुत सारे, लेकिन हमारे लिए एज एन रिसर्च स्टूडेंट और एज एन रिसर्च फेलो हमने एपीए स्टाइल में हमारा साइटेशन करना चाहिए। अब ये है क्या, आप सिर्फ गूगल में जाइए और गूगल में जाके एपीए साइटेशन को जस्ट ओपन कर दीजिए, तो वो आपको पूरा बताएगा कैसा होता है एपीए साइटेशन। तो आपके रिसर्च पेपर में जो भी रेफरेंसेस आप कोट कर रहे हैं, एक कोई तो भी मशीन, प्रॉपर मशीन साइटेशन वहां पे यूज करो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ऑथर का नाम लेते हैं, पहले पहले साइटेशन में ऑथर का नाम लेते हैं, दूसरे साइटेशन में पेपर का नाम पहले लेते हैं। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड हमने रिसर्च पेपर के साइटेशन में मेंटेन करना चाहिए। तो जनरली हमारे लिए हमको एपीए ये जो साइटेशन मशीन है इसको हमको रेफर करना है। अभी ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपको ये सब चीज मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की है। अभी यहाँ पे टाइटल कैसा होना चाहिए हम उसके ऊपर ही आ रहे हैं, बट आपका एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए, ज्यादा करके तो 200। जनरली आप देखो कि आपका जर्नल्स वाले या पीर रिव्यू जर्नल्स वाले ये बोलते हैं कि योर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी 500 वर्ड, 400 वर्ड, वो वहां पे क्राइटेरिया देते हैं। पर जनरल स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आपका टाइटल तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। वो टाइटल के बारे में मैं आ रही हूँ, हमारे नेक्स्ट स्लाइड वही है। लेकिन आपको एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा पैरा लिखना नहीं है, वर्ड में लिखना है। और लिमिट कितना रखना है ज्यादा करके
250 to 300 वर्ड्स अपने को क्या करना है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है। और मैंने पहले बोला है आपको कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें तो बस थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका एम क्या है, मेथड क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है, ये सब के बारे में आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है। बट इट शुड नॉट बी मोर देन 300 वर्ड्स इन अ रिसर्च पेपर, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, अभी टाइटल के बाद जो होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन भी होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है जनरली कि यहाँ पे जो भी उसके बारे में, उस पर्टिकुलर रिसर्च टाइटल के बारे में जो भी नॉलेज आपके पास है, जो भी आपने प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर कुछ अचीव कर किया है, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके, तो वो थोड़ा हमको इंट्रोडक्शन में लगा देना कि ये रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन है। अभी मेथड्स का भी बताया मैंने आपको कि मेथड्स क्या होते हैं, कि आपको अलग अलग आइदर एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड पड़ेगा या दूसरे स्टैटिस्टिकल टूल ओरिएंटेड होगा, या मटेरियल और कुछ चीज यूज करके कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, आपका केमिकल रिएक्शंस होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका मेथड्स में आएगा। यहाँ पे एक मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो पूरा मैंने सिर्फ एक पीपीटी में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो सेम कंसेप्ट है कि व्हाट शुड बी देयर, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, conclusion and references. This is a general representation of the structure of the research paper, right? But research paper होना कैसा चाहिए, what is the good quality you have to follow while you are giving the title to your research paper? अभी मैंने पहले बताया कि पहले कभी भी टाइटल नहीं देना है, बिल्कुल देना नहीं है पहले टाइटल। आपको क्या करना है, आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर आप एक आउटलाइन डिफाइन करो, वो आउटलाइन के हिसाब से आप काम करो। वो काम करते टाइम आपको मेथोडोलॉजी कभी कभी अलग चेंज भी करनी पड़ती है। पहले टाइटल दिया तो फिर हम मेथोडोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम पहले टाइटल देके बैठेंगे तो हम वो टाइटल के हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं और उसमें बहुत सारी चीज हमारी स्किप हो जाती है। तो बिल्कुल टाइटल पहले नहीं देना है, पूरा रिसर्च कर लो आप पूरा। और रिसर्च करने के बाद आपको ध्यान में आता है कि मैं डेफिनेशन टाइटल की यहाँ पे दे रही हूँ, इट इज एन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक, मेथड, सैंपल एंड रिजल्ट ऑफ योर स्टडी। ये आपका टाइटल में आना चाहिए। अभी हमने पहले टाइटल लिखा और बाद में मेथड सैंपल करने लगेंगे तो विल इट द वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर योर रिसर्च? नो, वो आपका टाइटल अप्रोप्रिएट नहीं होगा। जब आप पूरा रिसर्च कंप्लीट करेंगे तो आपका फॉर्मेशन ऑफ टाइटल कैसा होना चाहिए, देखो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पहला आएगा, फिर कोलन। देखो आप बोलेंगे मैडम ये तो कैसा अलग ही बता रहे हैं आप, लेकिन ऐसा ही होता है। आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, वो रिजल्ट पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बाद कोलन आपको देना है टाइटल में। फिर आपने कौन से मेथड क्या है, आपके मेथड क्या है, मेथड कुछ भी हो सकता है। मेथड आपका अलग अलग मेथड, एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, स्टैटिस्टिकल हो सकता है, केस स्टडी हो सकता है, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। वो मेथड का नाम यहाँ पे आना चाहिए। और स्टडी, किसकी स्टडी ऑफ, यहाँ पे टॉपिक देते हैं हम, लेकिन जनरली एनालिटिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ होता है। तो आपका टाइटल भी कैसा होना चाहिए, रिजल्ट पहला आना चाहिए। रिजल्ट ये वर्ड यूज करो या दो वर्ड यूज करो, आप सेंटेंस नहीं यूज करना है यहाँ पे, वन वर्ड या टू वर्ड यूज करो, उससे आप वो रिजल्ट आपके टाइटल में आना चाहिए। कोलन दे दो। उसके बाद आपने कौन सा मेथड यूज करा है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ, स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल स्टडी ऑफ, ये आएगा आपका वहाँ पे टाइटल में। और उसके बाद आपका जो रियल टॉपिक जो आपके प्रॉब्लम में था, आपके प्रॉब्लम में क्या था कि सोशल या डिजिटल युग का बहुत ही इम्पैक्ट बच्चों पे हो रहा है, वो आपका टॉपिक इशू था, टॉपिक था। तो वो टॉपिक आपका यहाँ पे आना चाहिए, राइट। और उसके बाद अमंग सैंपल, सैंपल मतलब क्या, ऑडियंस। ऑडियंस मतलब क्या कि अगर आपने प्राइमरी स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च किया तो वो आपका सैंपल होगा।
तो यूर स्टडी विल भी आपका सैंपल के वहां पे आएगा कि नहीं, ये हमारा हमने पढ़ाई जो ये सैंपल लिया, टाइटल, ये टाइटल जो बता रहा है मेरा रिसर्च पेपर, वो ये जिला ये प्राइमरी टीचर या प्राइमरी स्टूडेंट ऑन प्राइमरी स्टूडेंट, अमंग प्राइमरी स्टूडेंट, अमंग जो भी आप बोलेंगे, कुछ एक स्पेसिफिक अगर उस एज को अगर कुछ नाम देके रखा है तो वो नाम भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो आपका टाइटल ये टाइप का होना चाहिए। अभी जब हम टाइटल देते हैं तो आपको एक कुछ चीज ध्यान में रखना है, इट शुड बी वेरी कंसाइज होना चाहिए, मतलब थोड़ा छोटा ही होना चाहिए, बहुत बड़ा टाइटल आपका नहीं होना चाहिए। कि डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए, मतलब छोटा होने के बाद भी बहुत कुछ बता सकता है ये, ऐसा भी आपको टाइटल का एक ध्यान में रखना है, एक टिप ध्यान में रखना है। ज्यादा नहीं होना चाहिए कि कम वर्ड हमने आपके टाइटल में यूज करना चाहिए, दैट इज 5 to 15 वर्ड्स इज ओके, बट नॉट मोर देन दैट, राइट। जर्नल जो गाइडलाइन होते हैं हमको वो हमने ये करना चाहिए, जर्नल के गाइडलाइन भी चेक करना चाहिए, और ज्यादा करके ऐसे कोई सिंबल और वो हमने टाइटल में नहीं यूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, राइट। जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू में जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो जो रिसर्च रिव्यू है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है। कुछ भी लिटरेचर रिव्यू हमको लेना नहीं है। अगर आपको इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू करना है तो आपका 3 पॉइंट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक है लिटरेचर सर्च। अभी लिटरेचर सर्च मीन्स क्या कि जो आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड आपका रिसर्च लिटरेचर रिव्यू सर्च करके वही आपके इसमें आना चाहिए। अगर जो रिसर्च वहां पे हुआ है और जो लिटरेचर आप आपके रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका आपका क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है। सिर्फ लेके छोड़ना नहीं है कि व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस, इज what are the your opinion regarding that particular literature review which is done by the previous researcher or previous we can say fellow। उसका आपका क्रिटिकल एनालिसिस आपको वहां पे लिखना है। मेजोरिटी लोग इसका ध्यान नहीं लिखते, और उसके बाद आपको उसका एक डिस्कशन और उसका एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे देना है। अभी ये मैंने जो ओरली बोला है वही ये मैंने बोला है कि लिटरेचर सर्च क्या होता है, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या होता है, तो वही ये मैंने थोड़ा ब्रॉड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्रिटिकल में क्या क्या हो सकता है, क्रिटिकल एनालिसिस में क्या क्या होता है कि ये आपके रिसर्च क्वेश्चन, उनका रिसर्च क्वेश्चन क्या था, वो रिसर्च क्वेश्चन आपके रिसर्च क्वेश्चन सिमिलर है क्या, कुछ डिफरेंशिएट है क्या, उनके ऑब्जेक्टिव और मेरे ऑब्जेक्टिव में कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। देखो उनके और आपके ऑब्जेक्टिव सिमिलर हो सकते हैं लेकिन रिजल्ट अलग अलग आने की रिजल्ट अलग आएंगे, उनके जो रिजल्ट है वो आपके रिजल्ट नहीं आ सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर आपको क्रिटिकल एनालिसिस मतलब क्या है कि उन्होंने जो किया वो वही सही है ऐसा नहीं हमको बोलना है, उसको हम करके देखने वाले कि रियल में ऐसा होता है क्या। तो लिटरेचर रिव्यू सिर्फ लेके कॉपी पेस्ट करके या अपने लैंग्वेज में नहीं लिख के लेना है आपको, उसका आपका ओन क्रिटिकल एनालिसिस भी होना चाहिए। तो क्रिटिकल एनालिसिस किस किस कंटेक्स्ट में होना चाहिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि ये क्वेश्चन वो लिटरेचर रिव्यू के साथ आपको कंपेयर करके देखना है। सिर्फ आपको साइट में करना है, सिर्फ उसका लिटरेचर रिव्यू आपके इसमें लेना नहीं है, आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी उसके ऊपर करना है। अभी जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो जनरली 2 टाइप का एब्स्ट्रैक्ट आपको फॉलो करना पड़ता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है। अभी स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे हिडिंग रहेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको हिडिंग नहीं रहेगा, दोनों में फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। यहाँ पे आपके स्टाइल अनेबल्स होते हैं, यहाँ पे नहीं रहेंगे, राइट। यहाँ पे देखो थिंक ईच सेक्शन एज अ क्वेश्चन एंड प्रोवाइड द कंसाइज बट डिटेल आंसर अंडर द ईच हेडिंग, ये आपका स्ट्रक्चर में रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, इट गिव्स द कंटेस्ट फाइंडिंग कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ योर रिसर्च पेपर। तो आप किसको फॉलो करते हैं, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आपका आप स्ट्रक्चर भी हो सकता है,
स्ट्रक्चर भी हो सकता है। नाउ अभी ये जो इंट्रोडक्शन हम जब लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन कैसा लिखना है आपका रिसर्च पेपर का? तो आपको क्या करना है, पहले एक ब्रॉड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके प्रॉब्लम के बारे में देना है। उसके बाद आपका लॉजिकल राइट इट इन अ वेरी लॉजिकल मैनर में उसको पुटअप करना है, कि जो मैंने पहले बोला है कि उसका आउटलाइन डिफाइन करो, वो आउटलाइन के हिसाब से आपको इन वेरी लॉजिकल मैनर यू हैव टू रिप्रेजेंट योर प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करना है। फोकस ऑन द प्रॉब्लम यू इंटेंड टू सॉल्व विथ योर रिसर्च, यहाँ पे आपको फोकस किस पे करना है कि व्हाट द सॉल्यूशन आपने दिया है, वो सॉल्यूशन को ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है कि वो रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ आपने सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पे भी अगर दूसरा कोई आपका सॉल्यूशन है उसको भी इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है आपको। एंड ये भी बोला है मैंने कि अगर कोई मॉडल है, अभी कोई स्ट्रैटेजी है, तो उसको भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको इंट्रोड्यूस करना है। अभी ये आपके रिलेटेड ज्यादा नहीं आ सकता है ये, क्योंकि ये जो साइंटिफिक जो रिसर्च होता है या एक्सपेरिमेंट रिलेटेड जो रिसर्च होता है, वहां पे ये चीज को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो मैं थोड़ा इसके बारे में ये नहीं बता, क्योंकि आपका रिसर्च इसके रिलेटेड नहीं हो सकता है। ना कोई मटेरियल आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ना कोई इक्विपमेंट आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं ये आपके स्ट्रीम के रिलेटेड नहीं, इसलिए मैं थोड़ा इसको स्किप कर रही हूँ। राइट, ये भी उसके रिलेटेड ही था कि जो हमको मटेरियल एंड मेथड्स लगते हैं उसके रिलेटेड ये वाला था कि हमको क्या क्या यूज करना पड़ता है। बट इसमें से एक आधा आपके काम के आ सकता है। इसमें मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर और स्टैटिस्टिक्स आपके काम आ सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे तो बाकी मटेरियल और यही है। तो यहाँ से तो मैं सिर्फ ये दो ही बोलूंगी कि यहाँ आपके लिए स्टैटिस्टिकल टूल और कुछ सॉफ्टवेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अभी जब आप रिजल्ट लिखना चाहते हैं, तो हाउ यू हैव टू राइट द रिजल्ट। रिजल्ट में क्या क्या आना चाहिए? रिजल्ट में आना चाहिए कि आपको क्या इंक्लूड करना है रिजल्ट में। तो यू हैव टू कंट्रोल ऑन द ग्रुप डेटा। अभी मुझे मालूम नहीं आपको डेटा टाइप हुए या नहीं, बट ग्रुप डेटा कैसा होता है कि इट इज एन वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट लाइज बिटवीन द क्लास फॉर्म। वो क्लास फॉर्म में आपको मिलेगा या फ्रीक्वेंसी फॉर्म में आपको डेटा मिलेगा वहां पे। अगर मैं बोलती हूँ कि ग्रुप डेटा को अगर मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहूंगी मैं, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस पे भी आपको कंट्रोल करना है जब रिजल्ट लिखते हैं हम तब। आपके जो रिलीवेंट स्टैटिस्टिकल वैल्यू, जो पी वैल्यू, अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल और हुआ होगा आपको कि जब हम बोलते हैं कि मैंने 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे मैंने क्या किया है, मेरा रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्ट किया है, मतलब आप पी वैल्यू वहाँ पे देखते हैं क्या है 5%। तो आपको रिजल्ट जब लिखते हैं तो वहां पे मेंशन करना चाहिए कि माय 5% सिग्निफिकेंस लेवल मीन्स माय रिसर्च इज वेरी वैलिडेट बाय 95%। 95% ये पॉसिबिलिटी है कि मैंने जो रिसर्च किया है वो सही है। तो रिजल्ट में ये सब चीज आपका बहुत सिस्टमेटिक आना चाहिए। आपका फिगर, टेबल, विजुअलाइज, उसका विजुअलाइजेशन बहुत प्रॉपर आना चाहिए रिजल्ट में। राइट नाउ कुछ चीज आपको करना नहीं है कि जब आप रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका आउटपुट क्या है, आप रिजल्ट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिसर्च पेपर में, तो आपको मैंने पहले बोला है कि ऐसा कुछ भी कमेंट्री जैसा लिखना नहीं, या बहुत बड़े बड़े पैरा लिखना नहीं आपको वहां पे। बहुत कंसाइज वे में आपको आपका रिजल्ट रिसर्च पेपर में लिखना है, क्योंकि रिसर्च पेपर होता क्या, थीसिस थोड़ा होता है ये बहुत ही एक आपका 6-7 पेज का कंक्लूजन रिसर्च पेपर होता है, और उसमें आपको रिजल्ट कितना लिखना पड़ता है, आइदर 3-4 लाइन्स का रिजल्ट आपको वहां पे देना पड़ता है। राइट, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखना है कि बहुत कुछ मुझे वहां पे पैरे नहीं डालना है। रेफरेंसेस भी आपके रिलेटेड जितना है उतना रेफरेंसेस वहां पे डालना है। डेटा रिपीट नहीं करना है। बहुत बार हम एक सेंटेंस बार बार एक ही रिजल्ट बार बार रिसर्च पेपर पे लिख देते हैं, तो वो भी आपका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए रिजल्ट में।
बाद में जो डिस्कशन सेक्शन होता है, तो डिस्कशन सेक्शन में भी आपको आंसर, देखो डिस्कशन सेक्शन ऑफ योर रिसर्च पेपर, आंसर सेवरल क्वेश्चन। तो यहाँ पे डिस्कशन में आपने जो जो अजम्पशन किया है उसके आंसर्स आपको डिस्कशन में लिखना है, राइट। ये भी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ये भी आपको कुछ भी लिखना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बार बार मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये भी आपका जो डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन में क्या लिखना है आपको, आंसर ऑफ योर सेवरल क्वेश्चंस दैट इज रेज्ड एट द टाइम ऑफ द रिसर्च। आपका जब रिसर्च चालू है, आप जब रिसर्च कर रहे हैं उस टाइम पे जो आपके आपके क्वेश्चंस आपको आए वाले हैं, उसका पूरे का पूरा आंसर्स आपको डिस्कशन में लिखना है। देन व्हाट अबाउट द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन क्या होता है, ये बहुत ही आपकी छोटी समरी होती है। आपका जो रिसर्च पेपर आपने लिखा है वो रिसर्च पेपर का एक शॉर्ट समरी मतलब आपका कंक्लूजन होता है। तो कंक्लूजन में क्या होता है, हम जनरली क्या लिखते हैं कि एक्चुअली व्हाट रिजल्ट यू अचीव्ड बाय अप्लाइंग द सम पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल और योर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का एक छोटा समरी वहां पे आपको लिखना है, राइट। जो भी फाइंडिंग्स आपको मिले हैं वो फाइंडिंग का एक मीनिंगफुल सेंटेंस में रिप्रेजेंट करना, ये हम कंक्लूजन में लिखते हैं। और इन कंक्लूजन में एक या दो सेंटेंस आप रिकमेंडेशन पे दे सकते हैं फॉर फ्यूचर रिसर्च। लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही शॉर्ट आपका कंक्लूजन होना चाहिए। बहुत लोग कंक्लूजन 3-3 पेज कंक्लूजन लिखते हैं। एक्चुअली ऐसे रिसर्च पेपर में इतना बड़ा कंक्लूजन अलाउड इवन रिसर्च थीसिस में भी नहीं है। कंक्लूजन शुड बी वेरी कंसाइज, बहुत ही छोटा आपका कंक्लूजन होना चाहिए। और कंक्लूजन क्या होना चाहिए, फॉर द रिजल्ट यू ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द सर्च specific method and what is the result that will be you have to write in the very in a short form. It is nothing but it is a short para of the finding of what obtained after applying some research method, research tools we can say. रेफरेंसिंग मैंने तो ये पहले बताया आपको कि जनरली आपका साइटेशन जो है कि एपीआई, आपको साइटेशन मशीन प्रॉपर यूज करके आपको रेफरेंसिंग करना है। कुछ भी मेथड आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। अगर एक ही मेथड, अगर आप साइटेशन मशीन एक ही यूज कर रहे हैं तो आपकी पूरे रेफरेंसिंग उसी साइटेशन मशीन के हिसाब से आपने कोट करना चाहिए। तो दीज आर द वेरी वेरी बेसिक थिंग्स आई एक्सप्लेन हियर तो हाउ टू राइट द रिसर्च पेपर। उसके बाद आपको अगर किसी को ये देना चाहते हैं टेबल और प्रिपेयर, ये तो मैंने पहले बताया आपको कि आपके फिगर्स और टेबल बहुत ही प्रॉपर में मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर लीजेंड होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए। अगर आप 5-6 टेबल आपके रिसर्च पेपर में कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन है तो वो भी वेरी प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपने किसी को एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं तो रिसर्च पेपर में आप दे सकते हैं कि किसी ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कंट्रीब्यूट किया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी आप आपके रिसर्च पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ थीसिस में देंगे, नहीं, आप एक्नॉलेजमेंट आपके रिसर्च पेपर में भी क्रेडिट दे सकते हैं। So this is the little bit what I explained today to all of you how to write a research paper and what the precaution you have to take while you are publishing the research paper. What is the structure is given by particular journal. You have to follow that, but probably almost 99% what is the structure of publishing and research paper is same. It is not going to be vary according to the journal. So from my side, I'm ending here. If anybody having any type of question, he or she can ask. If any doubt regarding the how to publish, how to write the research paper, you can ask me. All participants, this session is open for all.
you can ask your queries or questions. This PPT I will share to sir. Pathak sir, you can refer it later on also. Yes, ma'am. I think everybody is eager to take a lunch, I think. They are fully satisfied. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. This session Yes, was ma'am. Yes, ma'am. Because I think this is a time for lunch, right? Thank you, ma'am. Very good session, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you, Pathak madam. sir. Thank you so Pathak much. sir. All participants. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, madam. Okay. Thank you, ma'am, for giving a nice lecture and useful for all. Thank you, madam. Even Thank you so much. Can prepared one research paper. Thank you, madam. Pathak sir said that everybody has to write a one research paper and you have to submit. I think that will be an assignment, right? Yeah. Yes. Yes, sir. So tomorrow. They have already pilot study. That's why they can develop Right. one paper easily. Right, sir. Sir, I think you have given an little bit instructions regarding the tomorrow's lecture, right? Yes. एक सर्वांना सूचना आहे माझं याच्याशी बोलणं झालं मॅडम गौरवशी एक कॉमन ते लिंक टाकणार आहे सर्वांसाठी उद्या. अच्छा. आणि सकाळी सगळ्यांचं 10 ते 1 लेक्चर आहे. सर्व पार्टिसिपंटनी याची नोंद घ्यावी. अच्छा. तुम्हाला लिंक शेअर केली जाईल. आपल्याला शेअर केली जाईल ना? हो. वेगळी लिंक मिळेल का आपल्याला? हो गौरव करून देणार तशी. बरं काय हरकत नाही. मग उद्या आपण सेशन ठेवून देऊया. ठीक आहे. तर सर्वांना विनंती की उद्या सर्वांनी जॉईन व्हायचंय आणि आजचे आपले रिसोर्स पर्सन डॉक्टर कावेरी लाड मॅडम यांनी वेळ देऊन अतिशय महत्त्वाचा जो विषय ज्यामध्ये तुमचं रिसर्च पब्लिकेशन सर्वांपर्यंत पोहोचू शकतं जो आपल्या संशोधन करण्याचा हेतू आहे त्याबद्दल त्यांनी अतिशय डिटेल आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असं एक लेक्चर तुमच्या समोर ठेवलंय. मी मॅडमचे प्री कोर्सच्या वतीने मनपूर्वक आभारी आहे. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. Again, I notice all the participants tomorrow have a lecture at 10 morning sharp. Okay, links will be provided on your group. Separate link should be provided on your group tomorrow. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, done. Okay, sir. Now you can leave.
आहेत. काय करू